Hello, everyone. Welcome back to another session by Grey Beyond Narratives. Today's session is also about Israel and Palestine conflict. Today, the land incursion in Gaza have begun. We're going to begin this session with some footage of what's happening in Gaza right now. The footage is recorded by PBS News Channel. Okay, Sid, is there an issue with the video? I don't know. I can't see the video. It Yeah, was stuck single frame. I think Sid has is having some technical difficulties, so we can go with the initial intro, Medusa, I guess. When he's back, we can play the video again. Okay, I guess so. The latest that's been happening in Israel and Gaza conflict, it's Israel has escalated its attack on Gaza both through airstrike and ground operation in response to the recent Hamas attack. The Israeli military has been amassing forces near the border and conducting airstrikes on targets within the Gaza Strip that they consider Hamas's place. A full scale invasion is likely to be led by tanks and armored personnel carriers. Hamas militant have been reported to be preparing for this invasion by stockpiling ammunition and setting up ambushes in the densely populated areas. This is also a report. Israeli military spokesperson Daniel Hagari confirmed that ground forces have expanded their activity in Gaza but did not announce the offensive or confirm Israeli troop entering the territory, while temporary incursion by Israeli tanks have occurred twice in the past 2 days. Around 7,000 Palestinians are killed by now by the airstrikes of IDF. Humanitarian aid has been delivered to Gaza, but is considered to be insufficient. Many journalists have lost their lives during this siege. Biden also tried to question the number of Palestinians being killed and its truthfulness, in response of which the Palestinian Health Ministry released the name of everyone who was killed. Also, the UN and aid group says that independent verification following previous conflict have found little disparity in reporting numbers from Palestinian sources. Internet has also been cut off, and Gaza is at the moment in a complete blackout, which has also brought the humanitarian aid to a standstill. Israeli Prime Minister and Biden are expected to talk in a few hours, and as far as we can see, Israel is out to exterminate any living being on the Gaza Strip. The US on Friday struck two facilities in eastern Syria in response to threats and attack against American forces in the region, and has deployed 900 troops to the Middle East, and coupled with air defenses batteries. There is also reports of Houthi, a few Houthi missiles being intercepted by the naval American army. On Friday, General Assembly of those missiles were directed towards Israel. So on Friday, General Assembly of UN passed resolution calling for immediate humanitarian truce, leading to a cessation of hostilities, while 14 countries, including Israel and the US, voted against the resolution. The UK and 45 other nations abstained, uh, while some 120 countries voted in favor. So, in this session, I guess I gave you almost the overview of what's been happening. And in this session, we will address some critical questions such as who is at
most disadvantaged in the ongoing conflict between Israel and Palestine? What impact does this ground incursion have on civilians and regional stability? What Hamas plans to do during the ground incursion, as it's already have some plans prepared for it, and how successful will it be? What are world leaders' perspective, including statement from President Biden, former Trump, and Turkey, and how all this conflict is affecting the relationship of Turkey and Israel, as Israel have also reportedly they're trying to overview the relationship between Turkey and Israel, as reported by the news. So yes, Shaji, over to you. Thank you very much. We're going to try and play the video again. So, Sid, can you like go ahead and do that? On Saturday, dense smoke rising from airstrikes. Video of what it said were its tanks entering the Gaza bit, a new phase of the war, but did not define it as a full ground. Taking a step forward. We sent such powerful fire against the enemy that it made the ground shake. This was like nothing Hamas has ever experienced before. The Israeli side of the border remained heavily fortified. We were here on the border with Gaza last night as the Israel Defense Forces announced they were sending more ground troops in. They've confirmed this morning that they did attack Gaza last night from the air, from land, and from the sea, accessing it from 3 points, the north, the east, and the northeastern corner just behind me. This morning, that operation's still ongoing, and we can hear the sound of artillery fire coming from positions spread all across the border. Listen carefully. In a new video, the IDF issued another warning for Gazans in the north to leave. For your immediate safety, we urge all residents of northern Gaza and Gaza City to temporarily relocate south. But airstrikes have cut off internet and phone signal in Gaza, and Arabic, not English, is the main language for most Palestinians living in Gaza. Palestinians in the West Bank criticized the blackout. People can't even call each other and tell each other what is going on. Why are you censoring the media? Show us what you are doing. Why are you not showing the children that you killed? Why do you kill women? Some Israelis also criticized the increased attacks. Ilan Zakaria's niece, Eden, is among the Hamas hostages. At a gathering in Tel Aviv, he worries she and the other captives might become collateral damage. I'm scared of, the situation, that if we put too much military pressure, we could hit our own people. Okay, I guess I can't hear the audio of the video for some reason. Is it just me? Yeah, I think we've seen pretty much. Yeah. It's fine. Just remove it. I think Sid is having some technical difficulties. It's fine. We'll just move on. The point over here was that, as you can see, that insurgency in incursion in terms of tanks and whatnot has begun in Gaza now. And what we see and what we've seen in the last 24 hours on behest of the UN, even though UN stood up against that and a lot of people challenged them, as far as countries are concerned, in terms of majority of the nations, there are some nations who do not want this ceasefire to occur. What exactly वो ceasefire क्यों नहीं चाह रहे हैं? इसकी क्या वजह है कि जो इतना अरसे तक ह्यूमन राइट्स की बात करते थे, ऑल ऑफ अ सडन उनके मुंह के ऊपर वॉर आ गई है.
even though their own populace is protesting. अगर हम US की बात करें तो not only Biden but Trump is not in the favor of the entire ceasefire at this moment. अगर हम United Kingdom की बात करें तो आपके जो दो major political parties हैं, Labour as well as Conservative, they're both not in favor of ceasefire right now. हालांकि यूके ने abstain किया उस सारे situation के अंदर. And if we look at majority of the European countries, अगर आप उनके अंदर भी देखते हैं तो what you'll see is that Germany, for example, has even banned their own rights for their own people to protest. अब इनकी क्या वजूहात हैं ये हम देख सकते हैं, इनके ऊपर हम आगे बात करते हैं अभी. उसके on top when you look at some countries, उन्होंने UN के अंदर जाके तो abstain किया है. उन्होंने abstain तो लेकिन outrightly उनका stance आपको समझ आता है. UK के अंदर 2-3 politicians हैं who have outrightly gone, one of them, Sadiq Khan, the mayor of London, he's outrightly gone against his own party and very evidently said he's going to allow the protests against Israel. He's going to condemn what Israel is doing. And on this point of view, he is not with Labour. He's very, very outrightly made that statement, which might, let's see in the future, शायद उसको उसका political career cost करेगा. The second person who has namely gone out, who is prominent in the UK, is Hamza, the First Minister of Scotland. अगर हम उसको भी देखें तो he is very, very vocal and he's made that side, and majority of the Scottish people are getting, well, people from around the UK are praising his stance. तो अगर हम मुसलमान कंट्रीज को देखें तो उनके अंदर भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने abstain किया. So we can look into details in regards to that. I think Medusa has a list of those people, so I'm going to go back to her, and then we're going to go to Khalid Bhai in terms of the opening of how he's viewing this in regards to that Pakistan ke hawale se, and then we've got Andolan ji on the panel. Obviously, Indian perspective aayega wahan se, and what he actually believes. So, Medusa, can you basically give us an overview in regards to कौन सी कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने एब्सटेन किया है और कौन सी कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने एब्सटेन नहीं किया? So for now, US and Israel and 14 other countries have are against the resolution, and they don't want any ceasefire. And UK is one of the 45 nations who have abstained. And while some 120 countries, most of which are Muslims, including Turkey and Saudi Arabia, all of them have voted in favor of ceasefire. जी खालिद भाई ये मेरे पास एक आई है कि महताब अजीज सहाफ़ी हैं जो इस वक्त लुबनान और गजा की बॉर्डर के ऊपर मौजूद हैं. 14 मिनट पहले उन्होंने ये वहां से रिपोर्ट भेजी कि लुबनानी हिजबुल्लाह ने जो है वो रॉकेट फायर किए हैं और इसराइल के एक फौजी दस्ते के ऊपर हमला किया है, जिसमें इसराइली फौजियों के काफ़ी लोग मारे जाने की जो रिपोर्ट है. और 5 मिनट पहले उसने जो भेजी है कि इस वक्त मकबूजा फ़लस्तीन के इलाके मगरबी गलीली के शलोमी नामी कस्बे में हिजबुल्लाह के बड़े हमले के ऐलानात के साथ साथ सायरन बज रहे हैं. इसराइली रेडियो ने कुछ देर कबल अपने नशरे में बताया कि हिजबुल्लाह गुज़श्ता रोज़ से वस्ती लुबनान से अपने दूर मार रॉकेटों से इसराइल को निशाना बना रही है, जो बहुत खतरनाक है. देखिए, जब जंग होती है ना, जंग, तो उसमें असाब की भी गेम होती है, उसमें डिसइंफॉर्मेशन भी फैलाई जाती है दूसरों के मोराल को डाउन करने. हकीकत यह है कि इसराइल ने जो पेशकदमी की है ना ज़मीनी तौर पे, इसमें इनको काफ़ी नुकसान जानी उठाना पड़ा है. हमास ने उनके जो है अल-कसाम ब्रिगेड ने वीडियो फुटेज भी जारी की हैं. दूसरी तरफ इसराइल जो दे रहा है, इसराइल बेसिकली जंगी जराइम का मुर्तकब हो रहा है. भाई वो सिविल आबादी के ऊपर, हस्पतालों के ऊपर बमिंग कर रहा है.
7,000, मैं कल की रिपोर्ट थी कि 7,000 में से 3,000 से ज्यादा बच्चे जो हैं वो शहीद हुए हैं। लेकिन ये यूरोपियन का जो डबल स्टैंडर्ड है अमेरिकन का, वो नहीं शो कर रहे। जंगी जराइम का आप टारगेट के ऊपर हमला करें, ठीक है, और फिर कुछ लोग ये भी कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश करते हैं कि जी हमास को ये काम नहीं करना चाहिए था, क्यों पंगा लिया, जब भाई वो किस्तों में मर रहे थे। वो इनका एक मुआहदा था हमास का और इनका ना अपने इसराइल के साथ कि ठीक है, आप मस्जिद अक्सा की बेहुरमती नहीं करेंगे। ये जो हमारे हर रोज जो है कभी 50 इधर से पकड़ लिए, कभी 6 उधर मार दिए। इनके सेटलर्स के पास भी गने हैं, वो भी जब जी चाहे किसी फलस्तीनी की काश्तकार की जमीन के ऊपर जाके जो कहता है जी आप ये जैतून आपने जो गाया था आप नहीं काट सकते, ये इतना जुल्म। तो वो किस्तों में मर रहे थे। जब इसराइल ने इस वायलेशन को खुलेआम जारी रखा जाए, जिसकी वजह से वो एक्शन लेने के ऊपर मजबूर हुए कि इसराइल की तारीख में पहली दफा 1,400 से ज्यादा इसराइली फौजियों के मरने के जो है वो खबरें हैं मुख्तलिफ टीवी रिपोर्टर की, अल जजीरा और मुख्तलिफ जराए की तरफ से। इसराइल का आज दिन तक इतना कभी जानी नुकसान नहीं हुआ, इतना माली नुकसान नहीं हुआ, और सबसे बढ़ के उनकी जो है ये सयाहत की इंडस्ट्री तबाह बर्बाद होकर रह गई। और बहुत से यूरोप के कंट्री से जो वहां पे जाके सेटल हुए थे, वो नफसियाती खौफ का शिकार हो कि उनके एयरपोर्ट भरे हुए हैं, फ्लाइटें जो हैं वो वापस जा रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है इसराइल के लिए। सिर्फ अरबों का तो नुकसान हो ही रहा है, वो तो पहले ही मार रहे थे। जो बच्चा जो है वो पैदा हुआ है मलबे के ढेर के ऊपर, वो हर रोज देखता है ये मर गया है, आज वो मरा है, ऐसा उसके लिए जिंदगी और मौत एक बराबर है। वो तो मार ही रहे थे, किस्तों में मार रहे थे। लेकिन इस दफा पहली दफा ये हुआ है, हम तो मरेंगे लेकिन साथ तुम्हें भी लेके मरेंगे। और पूरी जो है इंसानी बरादरी ह्यूमैनिटी की बुनियाद के ऊपर, ये देखें इसराइल का वजूद ही बेसिकली एक जारहियत है। इसराइल का वजूद ही सिरे से नजायज है। चले हालात के जबर के तहत जो है वो दो स्टेट का एक जो सामने आया सिचुएशन, उसको भी मान लिया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी इसराइल हर रोज जो है वो अपनी हदूद को बढ़ा रहा है। जो नई नई बस्तियां जो है आबाद कर अरबों से छीनी जा रही हैं और यहूदियों को बसाया जा रहा है। और दुनिया ने आंखें बंद की हुई थी। आहर दुनिया के जमीर को जगाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना था उन्होंने, कि नहीं? यही मेरा पॉइंट है जी शाह जी। जी, थैंक यू मालकम भाई। Khalid bhai, Andolan ji, you heard what Khalid bhai basically said. आपका इस पे क्या opinion है? Do you agree with his opening statement or do you have an alternative opinion? So, couple of points. One is with respect to the current fatalities of Palestinian side. The number currently being quoted by the Hamas-controlled Ministry of Health is 7,326 as of today. Yeah. However, the U.S. president as well as the Israeli side have rejected this figure, and we had also seen during the hospital bombing, which apparently, it was a internal rocket misfire. The initial casualty reported were close to 500 by the health ministry, which actually turned out to be anywhere between 30 to 70 dead. In the So this is, I'm talking about the last week hospital attack. A couple of things which Riyadh, right? If I'm taking the name correctly, sorry, what was the name of the gentleman who was speaking before me? Khalid. Khalid. Sorry, Khalid. So Khalid, Khalid talked about a lot of deaths, but I was just going through the figures, right? January to September 2023. There are not many deaths reported on either side, either Palestinian side or Israeli side, with respect to any bombing or any war or related to causing injury to each other. This death toll started on the early morning of 7th October. Before that, people were talking about, there were articles being published, it's a long, peace time in Middle East, right? These were the kind of articles we were reading. And what happened on the unfortunate day of 7th of October was
specifically civilians were targeted in that activity. Now, in a war, etc., what people typically tend to do, they target military or government infrastructure, right? So if let's say, US were to, or Ukraine is to, target Russia and Russia is to target Ukraine, they would initially target, the military establishment, the chowkis, the post, so on and so forth. However, the 7th October massacre was entirely targeted towards civilians, which killed more than 1,400 people. So that was the trigger point, and any responsible ecosystem would not escalate violence by starting it and then claim that the retaliation is not just. Ideally, the 7th of October incident should not have taken place to begin with. I mean, and specifically targeting civilians, that was something we haven't seen from civilized societies so far. Yes, there are wars, people fight wars, but they target each other's military infrastructure in case they want to proceed with war. So I sincerely doubt the figures which I will Hamas is reply quoting. this point. Yeah, just last point, When you Khalid finish. Saab. Yeah, just last point. Okay, a lot of civilian casualties on Palestinian side, right, is also the result of misfiring of Hamas and other militants' rockets into which fall in their territory. Funny, I isn't have it? put in a report, at the start of the discussion, wherein at this particular incident and the incidents earlier to that, the rate of rocket failures were anywhere between 17% to 20%. Right? So if Hamas has fired 7,000 rockets plus on Israel's side, and you calculate a conservative number of also 15%, 1,000 odd rockets would be hitting the Gazan territory itself, and at the end of the day, killing civilians and children and everybody. I mean, Very whosoever true. is there. No, that's the data I've presented. I mean, that's not Very what true. I'm saying. That's what the data is saying. Yeah. Yes. जी खालिद भाई आप हाँ कुछ जी, कहना इसमें है? दो चीज़ें मैं ऐड, एक तो ये जो है ना, ऐसा नहीं हो सकता कि ये जो एक इस रिडिकुलस कि उनके जो है वो मिसाइल जो हैं वो रॉकेट फायर है, वो उनके अपनी सिविलियन बादी के ऊपर जाके गिर गए। ये इस रिडिकुलस के ऊपर मुझे मजीद तबसरा करने की जरूरत ही नहीं है। ये जस्ट एक फॉल्स प्रोपेगेंडा है, उसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। नंबर दो, इन्होंने कहा कि ये सिविलियन, मुझे बताएं इसराइल में कौन सा सिविलियन है? इसराइल की 100% आबादी जो है वो मिलिटेंट है, उनका हर बंदे को जो है वो मिलिट्री की तरबियत दी जाती है। आपको पता है इस चीज का? और फिर वो जो है वो फलस्तीनियों ने जो अटैक किया है, हमास ने अटैक किया है, वो भाई वो अपने ही शहर, अपने ही इलाके, अपनी जमीन के ऊपर, उससे पहले ये इसराइल ने वायलेट किया है। मस्जिद अक्सा के ऊपर कितनी दफा जो है वो हमला कर चुके हैं। मस्जिद अक्सा को कितनी दफा उन्होंने जो है वो आग लगाई है, कितने जो है वो फलस्तीनियों को हर रोज शहीद किया जाता था। और फिर फलस्तीन कितने लाख जो है कैदी हैं और उनको टार्चर किया जाता है। ये यहां से वायोलेशन स्टार्ट होती है। और उसके बाद एक और चीज भी आप ज़हन में रखें कि ये फलस्तीन जो इसराइल के जो सेटलर्स हैं, उनकी अपनी प्राइवेट लोगों के पास भी गने हैं। वो जब जी चाहे जिसको मर्जी जाके वो मार सकते हैं। वहां पे ह्यूमन राइट्स नाम की कोई चीज नहीं है। ये ऐसा जो आप बता रहे हैं ना, ये तब होता अगर दो रेगुलर डिफरेंट कंट्रीज होते ना, तो फिर जो वायलेशन होती है। जबकि जो इसराइल है वो ऑलरेडी नजायज रियासत है, वो फलस्तीन की जमीन के ऊपर ही कायम है। ये तो ऐसे ही है जैसे मैं आपके घर के ऊपर कब्जा कर लूं और आपको कहीं, आप ये किचन आपका हुआ, आप इसमें बैठे, इसमें रहे, इसमें खाना खाएं, दैट्स एनफ। अगर वो आप अपना बाकी घर का कोई हिस्सा लेने की कोशिश करते हो, मैं कहता हूँ ये आपने जो वायलेट किया है, हमारा मायदा हुआ था। कौन सा मायदा? आपने मेरे घर के ऊपर कब्जा किया हुआ है, आपने पूरा मेरा घर छीना हुआ है, और मैं मजाहमत करना मेरा हक है। मैं अपने घर को दुनिया का कोई आइन, कोई कानून जो है वो मुझे इसको इलीगल नहीं कहता, इस मजाहमत को। तो बात को जो है वो उसकी जड़ से शुरू करें आप ना। और ये जो है ना, ये इसराइल, आपको पता ही है ये प्रोपेगेंडा कैसे होता है। फाल्स जो है नंबर इशू किए जाते हैं, हमारे इतने मार के। दूसरी तरफ जो गजा के अंदर पूरी दुनिया देख रही है किस तरह वो कारपेट बमिंग कर रहे हैं, ठीक, और सिविलियन आबादी, इसलिए कि वो एथनिक क्लिंजिंग कर रहा है। ये उनका टारगेट है इसराइल का कि इनकी नस्ल कुशी करो। साबरा और शतीला के कैंप हमें नहीं भूले, अभी तक भी उसकी फोटो हमारे ज़हनों के अंदर ताजा है, किस तरह बलडोजरों के साथ उनको जो कुचला गया था। ये कोई जुल्म की दास्तान आज की नहीं है,
ये जुल्म की दास्तान 60-70 साल 80 साल पुरानी है और दुनिया का ज़मीर सोया हुआ था। जब मजलूम उठ के जो है रिएक्शन देता है तो फिर जो है इनको सारी चीजें याद आ जाती हैं, जी इधर वायोलेशन होगी, इधर वायोलेशन होगी। इसराइल जो है एक नाजायज रियासत है और इसका एक एक कदम जुल्म के ओर मबनी है और अमेरिका बराबर का इस जुल्म के साथ मुलव्वस है और इंसानियत की बुनियाद के ऊपर फलस्तीनियों के हक में आवाज उठाना इस जुल्म के खिलाफ हर इंसान का फर्ज है, बियॉन्ड द रिलीजन। मैं मजहब से बालातर होकर बात कर रहा हूं। जी शाह जी, हो गया मेरी बात। बस एक लाइन इसमें ऐड करूंगा इसमें। हाँ जी, तो बेसिकली जैसा कि इन्होंने कहा इजराइल का हर व्यक्ति मिलिट्री में है। जब वॉर भी होती है तो when you attack each other, right, you do not attack the residents of military, right, because they are families, right? Second, retired people who are not part of the active military duty, they are not considered military. So if everybody in Israel has gone through a military training, that doesn't mean that everybody is part of the military and their houses also become a military infrastructure, their community center become a military. This is probably justifying end which is taking our society as a whole. I mean, आप imagine करिए कल को किसी से किसी का political बैर हो तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा कि 1400 लोगों की गर्दन काटी जाएंगी, 200 लोगों के साथ बलात्कार होगा पॉलिटिकल पॉइंट बनाने के लिए, वो भी सब सिविलियंस। Is that the way to do politics? I can understand, right? There is a two-state theory proposed and agreed by most of the nations across the globe. And the way to discuss this political issues is to raise awareness, to garner support, and go and sit on the table and resolve it, not killing 1400 people on their bed. अच्छा, एक मुझे इसके एविडेंस आपने देना है। आप ये जो है ना मगरब में भी यूरोप में भी यही प्रोपेगेंडा है, इसी को पॉइंट बनाया हुआ है उन्होंने। आपने इसका एविडेंस देना है कि सिविलियन को मारा गया है बिकॉल हमास हमने जो है फौजियों को मारा है। उन्होंने जो है रिलीज भी फौजियों की की है, जबकि जो सिविलियन उन्होंने पकड़े थे वो तो हमास की तारीफ कर रहे हैं। जिन औरतों को उन्होंने छोड़ा है वो वीडियो रिलीज किया, वो क्या हमारे साथ बड़ा अच्छा सलूक किया हमास ने। ये इसका एविडेंस आपने देना है कि 1400 जो सिविलियन मारा गया है, जबकि हमास का मौका दिया कि हमने फौजियों को मारा है और उसकी वीडियो रिलीज की उन्होंने। जी, आपने अपने प्रश्न का जवाब खुद ही दे दिया। जो 2 महिलाएं छोड़ी गई थी वो 85 साल और 80 साल की। वो तो उन्होंने अरेस्ट किए हैं ना, वो तो जो उनके आए हैं वो अपने कैदी छुड़ाने के लिए ये वार स्ट्रेटजी है। उनका 1 लाख से ज्यादा फलस्तीनी जेलों के अंदर टॉर्चर बर्दाश्त कर रहा है। अब इनके बदले वो अपने जंगी कैदियों को छुड़वाएंगे। जी, तो आप कौन सी गलत बात है? हाँ, तो अगर आप सिविलियंस को 85 साल की महिलाओं को कैप्चर कर रहे हो, बच्चों को कैप्चर कर रहे हो, तो ये enhance in itself, मतलब it is self-evidentary that they attack civilians, right? That is why they were able to capture civilians. 85-year-old ladies are not military personnel, right? लेकिन वो जो है उनके भी तो जो फलस्तीन की इस्राइल की जेलों के अंदर हैं 1 लाख, क्या वो सारे हमास के लोग हैं? क्या वो सारे फौजी हैं? क्या वो भी तो सिविलियन ही है, उन्होंने पकड़े हुए हैं। और ये जो रोज मारते हैं, हर रोज कभी किसी किसान ने जो है उसकी खेतों के ऊपर उसको, वो क्या फौजियों को मारते हैं? वो भी सिविलियन को ही मारते हैं। उस 2 आबादियां आपस में कन्फ्रंटेशन कर रही हैं, 2 आबादियां आपस में मुतसादम हैं, वहां पे कोई रेगुलर आर्मी नहीं लड़ रही। इसराइल ने अरबों की जमीनों के ऊपर कब्जा किया है, वहां पे नई नई बस्तियां बसाते हैं वो, और वहां पे उनके खेतों के ऊपर जब फसल तैयार हो जाती है, उनको जब काटने की बारी आती है उसको भगा देते हैं, चलो भागो ये हमारे खेत है। ये तो सिविलियन के जो है सिविलियन के ऊपर जुल्म कर रहा है। तो ये नहीं है कि कश्मीर में पाकिस्तान और इंडिया की LOC या दोनों तरफ जो फौजी आपस में आमने सामने खड़े हैं। सिचुएशन को समझने की कोशिश करें। अगर आप सिचुएशन को इसराइल की आंख से देखेंगे तो फिर आप अपने आप को हक बजाने समझेंगे। जी, मैं सिचुएशन को अपनी आंख से ही देख रहा हूँ और सिचुएशन की तरह ही देख रहा हूँ। अगर ये 7 अक्टूबर को इंसिडेंट ना इनिशिएट होता तो आज हम लोग ये डिस्कशन ना कर रहे होते। ये पहले हो जाना चाहिए था, ये पहले हो जाना चाहिए था। क्यों जुल्म कर रहा है इसराइल? क्यों उनकी जमीनों के ऊपर काबज है? क्यों लाखों लोगों को उसने जो है वो जेलों में बंद किया हुआ है? क्यों उनकी जमीनों के ऊपर नाजायज तौर पर काबज है? हमारा प्लाट के ऊपर कोई कब्जा कर लेना पाकिस्तान के अंदर या इंडिया के अंदर, तो हम जो है 50-50 साल मुकदमा लड़ते हैं और कत्ल करते हैं एक दूसरे को।
और उनके पूरे पूरे शहर छीन लिए जाए, हम कहते हैं नहीं आप चुप करके जो है वो अमन के गीत ऐसा ऐसा कहाँ होता है भाई साहब? जी जी, तो सिविलाइज्ड वे जो होता है वो मुकदमा करने का होता है, कत्ल करने का नहीं। ये कोई इंडिया में सिविलाइज वे भी, नहीं है ये इस दुनिया इंडिया में। जो है वो माइट इज राइट है। पाकिस्तान इसराइल और अमेरिका और ये जो सारी कुत्ते हैं, ये जालिम और जाबर कुत्ते हैं, इन्होंने हमेशा जुल्म का साथ दिया है। जब ईस्ट इंडोनेशिया के अंदर कोई मसला होता है, साउथ सुडान के अंदर, वहां पे जो लोग अपनी राइट के लिए बात करते हैं, 6 महीने के अंदर मसला हल हो जाता है, साउथ सुडान अलहदा हो जाता है। कश्मीर के अंदर 80 साल से इंसानियत तजलील हो रही है, उसको मसला लटकाया हुआ है। जब जहां पे मुसलमान होगा विक्टिम, उसको कभी हल नहीं करेंगे। जहां पे ईसाई होंगे फौरी तौर पे मसला हल हो जाए। आपके सामने ही साउथ सुडान का मसला, जबकि जी, कश्मीर का मसला जो है वो लटकाया हुआ है। हाँ, आप स्कोप ऑफ डिस्कशन को थोड़ा सा एनहांस कर रहे हैं। कश्मीर का मुद्दा काफी हद तक सुलझ चुका है, एक्सेप्ट फॉर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो कि जल्दी माइट के बेसिस पे ले लिया जाएगा और सिटीजन भी वहां के आ नहीं जाएंगे। सुलझा नहीं है अभी। जरा ये थोड़ा सा हमारा रिजीम चेंज होने दो। ये इंडिया के गले की हड्डी बनेगा कश्मीर, इंशाल्लाह बना हुआ है और मजीद बनेगा। ये 9/11 के बाद इंडिया को मौका मिल गया ना इस्लामी तहरीकों को दबाने का, उसी चक्कर में जो है वो, लेकिन दे विल कम बैक इंशाल्लाह ताला। Khalid साहब, let's not ज्यादा go देर to चल नहीं सकता। let's not move away from the main topic. ठीक है, हमारा Alright. टॉपिक हमास और इजराइल है. So मैंने I एक want example दी थी I सिर्फ। want to place the question for you guys. The first question was, who is at most disadvantaged in the ongoing conflict between Israel and Palestine? I would say, personally, I would say it's the Palestinian civilian who are losing their lives without doing much, without doing anything. They're being trapped in one small place. And they're being bombed regularly. Abhi ground incursion bhi shuru ho gayi. Most probably a lot of them will die and a lot of people will call them collateral damage. As we already know, there are 7,000 people dead. And there are people already questioning that number. But over to you, Shaji. What do you think? आई थिंक कि इस सारी चीज़ के अंदर अगर सोचा जाए तो सबसे ज़्यादा तो जो परसिक्यूशन हो रही है वो पहले तो लेट्स बी क्लियर, आम बंदे, आम सिविलियन की जान जा रही है। ऑन टॉप ऑफ दैट जो सबसे ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन हमने देखी है in dead bodies, that is not Hamas, that is not Israel, that is just the average Palestinian. वो अब आज नेतन्याहू जो है और वो जो दूसरे लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हमने आपको टाइम दे दिया है, फलानी जगह दे दी है, आप उस जगह के से निकल जाएं, हम इस जगह को बॉम्ब करेंगे। इज इट दैट सिंपल? इज दैट काइंड ऑफ अ वार्निंग इनफ? वो क्या छोड़ के जाएंगे? ये तो आम बंदे की लाइफ की यहाँ पे सिचुएशन है जो इस तरीके पे आ रही है। तो इस चीज़ के ऊपर मेरा ख्याल है वी आर गोइंग टू गो टू हसाम अफरीदी। ही हैड I want to add one thing here. जी 2 पॉइंट है, उनको जरा ज़हन में रखें। वेस्ट बैंक में हमास नहीं है, वहां पे भी बमिंग हो रही है। और नंबर 2 वहां भी एग्जैक्टली और इन्होंने जो कहा है कि निकल जाएं, जो काफिले जा रहे हैं ना निकल के, उनके ऊपर बमिंग की है, बसों के ऊपर बमिंग की है इन्होंने। बिल्कुल। और आप देखें ईरान को भी इनडायरेक्टली इन्होंने ऑलरेडी टारगेट बनाया सीरिया में अटैक करके, और उनको वर्बल और लेबनान के ऊपर भी इन्होंने फायर बमिंग की है इन्होंने, इसराइल ने। बदमाशी है उसकी, और क्या है। लेकिन खालिद भाई एक और क्वेश्चन है इससे पहले कि हम हसाम अफरीदी पे जाएं। सऊदी अरेबिया का बड़ा इंटरेस्टिंग रूल है जो अपेरेंटली हुतीज ने इजराइल पे रॉकेट को लॉन्च किया था, उसको इंटरसेप्ट किया सऊदीज ने। इट वाज हेडेड टुवर्ड्स इजराइल। ये भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो अभी खुल के सामने एग्जैक्टली नहीं आ रही, बट देयर आर ग्रे एरियाज because nobody is a claimant of it apart from the Houthis. अच्छा, सऊदीया की एक और खबर भी है कि सऊदीया में आज शकीरा का कॉन्सर्ट भी चल रहा है। अच्छा, पूरी दुनिया उनके मुसलमान गम में डूबी हुई है और वहां पे शकीरा का जो है कॉन्सर्ट भी चल रहा है। ये है सऊदीया का रोल। चले, कोई मसला नहीं। I want to add one thing here. एक सेकंड शाजी, I want to add one thing here. जो फलस्तीनियों की जान जा रही है वो खाली बॉम्बिंग की से नहीं जा रही। So there is a humanitarian crisis as well. इंटरनेट बिल्कुल बंद हो गया, so technically
नथिंग इज मतलब कुछ देखने को नहीं मिल रहा है सच। तो दूसरी बात ये है कि देर आर ऑल्सो रिपोर्ट के पानी की कमी की वजह से वहां पे लोग गंदा पानी पी रहे हैं, विच इज ऑल्सो कॉजिंग बीमारियां एंड स्टफ, एंड हॉस्पिटल का सारा फ्यूल खत्म हो गया है, जिसकी वजह से भी अमवात में वो इजाफा होता जा रहा है। सो इट इज ऑल्सो लाइक एडिंग इनटू सो मेनी थिंग्स अदर देन द बॉम्बिंग। So can I add a point here? You raised a very genuine point, Medusa, because I was reading a report, even before the war, the hygiene and clean drinking water, is or unclean drinking water is the reason of 20% kids death in Palestine, right? Even before the war, but that was the scenario. Now here we have got a administrative unit in form of Hamas, who has been able to build $1 billion worth of tunnels, but is not able to build, clean drinking water plants for its civilians from the last whatever number of years. But Andolan ji, in this argument, the problem is it's a war zone since like 4 or 5 decades. तो बहुत ज़्यादा war zone रही है, और उसमें जब आपकी population move भी करती है, displace भी होती है, government कोई stable नहीं रही, so I don't think so you can blame them for not having a better infrastructure in terms of health, water, sanitation, whatever. It's been a war zone. अभी 4 साल पहले भी हुआ था, उससे 4 साल पहले भी हुआ था, अभी भी हो रहा है. I think it's a bit unfair to say कि ये जो onus है, burden है, वो इनके ऊपर है कि इनके पास facilities नहीं है. So I'll just give you the statistics thing. Very recently, India ran a Har Ghar Jal program, right? Clean drinking water to every household. And a state like UP, which is 260 odd million people, right? The expense for doing this entire program was less than $500 million, right? And we are talking about a population of 2.5 million, if I'm not wrong, or 25 million. What's the number exactly? 2.3 million, right? So, so I can understand that hospitals may not be able to erect it, right? There would be infrastructure issues. But providing clean drinking water, I mean, that's not a huge issue for 2.5 million people. I mean, it's not even a 100K expense or a 500K expense, right? देखें, ये लोकल मसला है वहाँ का, पता नहीं आपने ये कहाँ से इंफॉर्मेशन ली है, जस्ट टू टारगेट हमास। वहाँ के लोगों ने हमास को इलेक्ट किया है, उन्होंने को वोट दिए हैं। अगर उनका मसला होता ना ये जानी जिस तरह आप बना रहे हैं, तो कभी उसको वोट ना देते वो। जी मैं इसकी भी रिपोर्ट देता हूँ, मैंने भी पढ़ा है, जाके नहीं देखा। लेकिन खालिद भाई, जहाँ तक इलेक्शंस की बात है और उनके पावर में आने की बात है, यहाँ पे वी हैव टू कीप इन माइंड लास्ट इलेक्शंस व्हिच टुक प्लेस वाज इन 2006. एग्जैक्टली कितने लोग हमास को सपोर्ट करते हैं और कितने नहीं करते, उसकी बहुत वेरियस न्यूज़ेस हैं. बहुत सारे लोग जो हैं वो पैलेस्टीनियन सपोर्ट किस लेवल तक हमास एंजॉय करता है, इसके अंदर भी एक डिस्पैरिटी है. जाहिर है वहाँ पे दूसरी कुर्ते भी हैं, अल-फतह भी है, पीएलओ, अल-फतह भी मौजूद है, पीएनओ भी है. और एक और बात है, ये जो इस पॉइंट पे मैं एक और बात यहाँ पे कहना चाहूँगा, जो इजरायली गवर्नमेंट और जो वेस्टर्न ऑर्गेनाइजेशंस बहुत सारी स्पेशली जो पावर में है, जब वो ये वाली बात करती हैं कि हु इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पैलेस्टाइन और स्पेसिफिकली गाजा स्ट्रिप, तो कुछ अरसा पहले तक तो वो पीएनओ की मैनेजमेंट के साथ काम कर रहे थे. आफ्टर दिस अटैक, हाउ डिड दे ऑल ऑफ अ सडन रिकग्नाइज? देखें, जब आपने 2006 से लेके अब तक रिकग्नाइज ही नहीं किया कि हमास की कोई गवर्नमेंट हो सकती है या नहीं हो सकती, एंड यू डोंट वांट टू नेगोशिएट विद देम, तो अगर हमास एक एक्शन टेक करता है और क्रिएट करता है, तो उसका रिप्रकशन और उसका ब्रंट जो है आम पैलेस्टीनियन के ऊपर आप कैसे गिरा सकते हैं? और उन अथॉरिटीज़ के साथ जिनके साथ आप सिंक करके जिस तरीके से भी निगोशिएट कर रहे थे और डे टू डे चीज़ों को डेवलप कर रहे थे, या वो बेचारे डेवलप करने की कोशिश कर रहे थे, वो तो आपने 2 हफ्ते के अंदर तबाह बर्बाद कर दिया.
पैलेस्टाइन के अंदर जो पिछले 10 साल के अंदर हॉस्पिटल्स बने, स्कूल्स बने, बिजली की चीज़ें बनी, आपके पावर प्लांट्स बने, देर ऑल गॉन इन 2 वीक्स आफ्टर लैंड दिस। लॉक्ड है, वो लैंड लॉक्ड है, गजा का मुहासरा किया होता है, कोई चीज जाने ही नहीं देते उधर, हाँ, कंट्रोल्ड तो एरिया है। हमास को तो एक एक्सक्यूज बना के देव डिस्ट्रॉयड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ गाजा, and they are not stopping. तो with that मैं हसाम अफरीदी के पास जाना चाहूँगा. I think he understands the question. Who is the actual victim in all this? Is it Hamas? Is it the Israeli state? Is it the Palestinian people? Who is the actual victim here, in your opinion? Thank you, Shaji. Definitely, it is without a shadow of doubt the Palestinian people and the civilians who are being आपकी आवाज़ नहीं आ रही हसाम. शायद एक जरा अपने ना क्वेश्चन को करेक्ट कर लें. डोंट सेपरेट फलस्तीनियन एंड हमास. हमास फलस्तीनियों के लिए लड़ रहे हैं, उन्हीं के लिए, वो खुद भी फलस्तीनी है, कोई अफगान मुजाहिदीन नहीं वहां पे पहुंचे हुए. लिहाजा ये आपका जो करेक्शन इसको कर लें अपने आंसर को, फलस्तीन और खालिद हमास भाई, ये टू थिंग्स. मैटर ऑफ ओपिनियन है. इसके अंदर बहुत सारे लोगों के, जिस तरह फॉर एग्जांपल अब्बास का स्टेटमेंट है, इसके ऊपर हमजा का स्टेटमेंट है, इसके ऊपर वेरियस पैलेस्टीनियन लिबरेशन फ्रंट का स्टेटमेंट है. ठीक है, ये सारे लोग ये कहते हैं कि हमास के साथ आम पैलेस्टीनियन जो है उसकी क्या सपोर्ट है, दैट इज क्वेश्चनेबल. और फिर दूसरी एक पार्टीज हैं जो कहती हैं हमास और पैलेस्टाइन सेपरेट नहीं है. और इसके अंदर जो मेन ओप्रेसर है वो इजराइल है. इजराइल जो है ऑल ऑफ अ सडन, जो इतने सालों से ये कहता था कि हम हमास से डील नहीं करेंगे, और हमास को वो नेगोशिएशन टेबल पे अपनी अथॉरिटी पे जब मर्जी ले आता है और अपनी मर्जी से उठा के बाहर फेंक देता है, कि कभी वो उस तरह हो जाते हैं. अगेन, अगर वो इस वक्त रिप्रेजेंटेटिव बता रहा है पैलेस्टाइन का हमास को, तो आई वुड बी वेरी स्केप्टिकल कि एक तरफ इजराइलीज जो नियरली स्ट्रेटेजिकली कारपेट बॉम्ब कर रहे हैं, जो इनकर्शंस कर रहे हैं, जो पैलेस्टीनियन बच्चे और औरतों को मार रहे हैं, खालिद भाई, ठीक है, उनकी बात मैं कैसे मान लूं उन उससे लोगों पहले के भी मार रहे ऊपर थे, ये जो. 7 अक्टूबर से पहले भी बच्चों को मार रहे थे ना, फलस्तीनियों को तो मार ही रहे थे, लेकिन वो तो मार ही लेकिन रहे थे, लेकिन वो वो खबर मेरा नहीं आती. क्वेश्चन नहीं है. वो तो 70 साल से मार रहे हैं. तो हाँ. जो 70 साल से मार रहे हैं उनकी बात मैं कैसे मान लूं उन लोगों के ऊपर, जिस तरह हमजा जैसे लोग हैं और कई तरह के लोग हैं. अरसलान, अरसलान रजा है. देर आर वेरियस एक्टिविस्ट. लिंडा सारसोर है यूएस के अंदर. शी इज वेरी वोकल अबाउट दीज थिंग्स. शी इज फ्रॉम पैलेस्टाइन ओरिजिनली. जब वो लोग अपने आप को डिस्टेंट कर रहे हैं कि ये सारा कुछ है, तो मुझे एक पैलेस्टीनियन लीडर की, एक पैलेस्टीनियन एक्टिविस्ट की आवाज के अंदर ज्यादा वेट लगेगा कंपेयर टू इजरायली स्टेट के ये पैलेस्टीनियन के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं. और इस वजह से आई विल बी वेरी स्केप्टिकल एंड आई वुड लाइक यू टू बी अ बिट स्केप्टिकल कि ठीक है, हम इमोशनल होके चीजें कहते हैं, लेकिन इजरायली स्टेट का ऑपरेशन एक अलहदा बात है. हमास की क्या रिप्रेजेंटेशन है पैलेस्टीनियन के अंदर, वो क्या सपोर्ट इंजॉय करते हैं और कितनी नहीं करते, ये एक सेपरेट इशू है. इसके ऊपर डिफरेंट ऑफ ओपिनियन है. इस्माइल हानिया फलस्तीन का वजीर आज़म मुंतखब हुआ था इलेक्शन जीत के, लेकिन वो अमेरिका को मंजूर नहीं था, वो इसराइल को मंजूर नहीं था, क्योंकि उनको हार्ड लाइनर कहते हैं. इसलिए उनको जो है उनकी हुकूमत खत्म करके अपना पपेट जो है वो महमूद अब्बास बैठाया गया. अच्छा, तो खालिद भाई, यहाँ पे मेरा आपसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ये है कि वेरियस अकाउंट्स हैं पैलेस्टीनियन लीडर्स के, और मैं अब्बास की यहाँ बात नहीं कर रहा, और आम पैलेस्टीनियंस के, जिन्होंने इसराइल के बारे में तो गुफ्तगू की ही है, लेकिन उन्होंने हमास के बारे में भी गुफ्तगू की है कि किस तरीके से हमास हैज आल्सो बीन प्रॉब्लमैटिक फॉर देयर डेली लाइव्स. जी शाजी, वो वही यहाँ तकसीम पे है ना एक जो मुस्लिम ममालिक डिस्पैरिटी में है. है, लिबरल, सेकुलर और इस्लामिस्ट की, ये तकसीम वहां पे भी मौजूद है.
लेकिन लिबरल्स वो और इस्लामिस्ट इस्लामिस्ट, आप हम ये मैं तो डिवीजन वहां मौलाना पे भी हजरात मौजूद है की जिस बात तरह नहीं कर पाकिस्तान में रहा। मौजूद है। खालिद भाई, पाकिस्तान के अंदर तो मौजूद है, लेकिन अब देखें ना, एक तरफ अल-कायदा जैसी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, No, that's तालिबान जैसी something different, हाँ। ऑर्गेनाइजेशन। अल-कायदा को बीच में मत लाएं, वो जो है वो इंतखाब पसंद है, मैं वो बीच में नहीं ला जमहूरियत रहा, को मैं हराम आपको कहते हैं, वो एग्जांपल इलेक्शन दे नहीं रहा लड़ते। हूँ। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, पूरी बात सुने फिर आपको बस समझ आएगी मैं क्या कह रहा हूँ। देखें, अल-कायदा जैसी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर या कोई भी एक पार्टीज हैं, उनको सपोर्ट का एक डिफरेंट म्यार है ना, एक गेज है। इसी तरीके से पैलेस्टाइन में भी, गाजा स्ट्रिप के अंदर भी एक गेज है। अब उसके अंदर जितने लोग हमास को सपोर्ट करते हैं और जितने नहीं करते, उनको आप लिबरल और नॉन इस्लामिक या लिबरल या इस्लामिस्ट के बीच के अंदर डिवाइड नहीं कर सकते। दे विल नहीं बी है वेरी ना, नॉन वो रिलीजियस पीपल। पीएलओ जो है वो सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन, खुद कहते हैं सेकुलर है, हम नहीं कहते, वो खुद कहते हैं हम सेकुलर है। लिंडा सारसो तो सेक्युलर नहीं है, मैं हमजा उसको नहीं तो जानता, मैं सेक्युलर जिनको नहीं है, जानता हूँ मैं उनके बारे में अरसलान बात तो कर रहा हूँ। सेक्युलर नहीं है। ये सारे लोग, मैंने तो नाम लेके आपको स्टेटमेंट्स दिए हैं, या वो जो औरतें और बंदे जो हमास का टारगेट भी हुए हैं पैलेस्टाइन के अंदर एज वेल एज इसराइल का हुए हैं, वो तो सेक्युलर नहीं है, उनके बच्चे भी बच्चे ही हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं ऊपर तो ये ओवरऑल बात कर रहा डिस्पैरिटी हूँ हो रही कि है, मैं फलस्तीन में जो खुद पार्टीज है, मैं ही पर्सनैलिटीज की खालिद बात नहीं कर रहा। पीएलओ से खुद लोग तंग आए थे, महमूद अब्बास से खुद फलस्तीनी तंग आए थे कि ये करप्शन करते हैं, ये करप्ट लोग हैं, इसलिए उनको अपॉर्चुनिटी, दूसरों को उन्होंने जो है वो वोट दे के ले थे, उनकी हुकूमत जबरदस्ती। भाई इलेक्शन ही होता है ना मैयार, इलेक्शन में तो वो जीते थे, उनकी हुकूमत जबरदस्ती खत्म की इसराइल ने। 2006 के बाद कोई इलेक्शन नहीं हुआ खालिद भाई। भाई जब भी हुआ था, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ ना, उसके बाद तो कोई इलेक्शन होंगे तो पता चलेगा ना खालिद कौन भाई, मेजॉरिटी वो उस रखता है कौन नहीं इलेक्शन रखता। का स्टेटस गजा के अंदर क्या है, ये भी चेक करना चाहिए ना। तो तो ये जब कई होगा, तरह की देखिए चीजें अभी तक हैं। जो देखें, पॉपुलर मैं मूवमेंट जो है अंडरस्टैंड इंतफाजा करता की, हूँ। वो तो हमास ने देखें चलाई है। देखें खालिद भाई, मैं अंडरस्टैंड करता हूँ आपको हमास जो है वो एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन लगती है, यस आई सपोर्ट, लेकिन ओपन खुलेआम सपोर्ट करता हूँ हाँ, मैं। कोई बात आई नहीं। लव देम, आई सपोर्ट देम। लेकिन मेरा ओपिनियन इसमें से वेरी करता है। आई डोंट सपोर्ट यू हमास हैव योर राइट, बिकॉज आई यू कैन एक्ट। हैव डिफरेंट मैं ओपिनियन। आपको बता देता हूँ ना उसकी वजह क्या। आप डिसएग्री कर सकते हैं, मुझे कोई भी मसला नहीं होगा, ठीक है। देखें, आई बिलीव कि इस वक्त इस इंसिडेंट के अंदर जो उन्होंने इसराइल के अंदर किया है, वो तो पहली बात है, वो सिविलियंस को मारना गलत है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने इज़राइल जो एक इतनी ऑप्रेसिव और एथनिक क्लेंजिंग से भरपूर किस्म की कंट्री है, एक अपार्थाइड जेनोसाइडल प्रैक्टिसिंग मुल्क है, जिसकी कंसेप्शन ही एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए थी, जिस तरीके से वो एग्जिस्टेंस में आई, उसको अनेबल कर दिया है कि वो जो गाजा का बचा हुआ है उसकी एक्सक्यूज मिल गई है, जाके वो तबाह बर्बाद करते हैं। और तो ये इसराइल बहुत भी तो सारे तबाह लोग बर्बाद हो करते रहे हैं हैं। ना, जंग में दोनों तरफ नुकसान होता है, उनके फौजी मर रहे हैं, दूसरी तरफ सिविलियन मर रहे हैं, वो तो पहले भी मर रहे थे, उनके लिए मरना और जीना एक और ही इसके बराबर है। अंदर हमास के कितने लोग मर रहे हैं? हमास के भी कुछ शहीद हुए होंगे, लेकिन कितने? अक्सरियत फलस्तीन की तरफ से जो है वो सिविलियन मर रहे हैं। अच्छा शाहजी, ठीक है, एक मैं यही कमेंट तो था कह रहा छोटा हूँ। सा। यही पॉइंट उठा के तो जो है वो जंग से डरा रहे हैं कि भाई मजामत ना खालिद करो भाई, वरना सिविलियन खालिद भाई, मारेंगे। खालिद भाई, मतलब ये कि हमास के जो कैजुअल्टीज हैं या हमास के ऊपर जो अटैक हैं वो इजरायली भी नहीं कर रहे, उनको कर रहे मार हैं ना, भी नहीं क्यों नहीं रहे। कर रहे, उनका भी उन्होंने आज वीडियो जारी की है, हमास के लोगों की वो लाशें टैंक के पीछे बांध के ना तो वो घसीटते, उन्होंने वीडियो इसराइल ने जारी की है। जी, कितने कितने मारे हैं उन्होंने? भाई अब ये कोई एग्जैक्ट रिपोर्ट थोड़ा ही आई है, जाहिर है जब जंग हो रही है, जमीनी हमला उन्होंने किया है तो उसमें जो है वो जाहिर है वो दूसरी तरफ भी तो चलें, शहीद हुए हैं। आपके ख्याल से 100 होंगे, 200 होंगे, 300 होंगे, कोई एस्टिमेट तो होगा ना? आपको पता है इस वक्त हाँ जी, देखें पैलेस्टीनियन ये जो कितना जंग मर में जो गया? है ना वो नंबर्स इशू किए जाते हैं, हर तरफ से मुबालगा होता है, दोनों इसराइल कुछ कह रहा है, वो कुछ कह रहे हैं। अब जो चलें, है आप मुझे हमास, बताएं वो कि भी तो इसी पैलेस्टीनियन आबादी में रहते हैं ना, वो कोई जंगलों में थोड़े रहते हैं। खालिद भाई, जब आपको बमिंग मेरा हो रही है सवाल वो भी समझ बीच में में मर रहे नहीं हैं, आ वो रहा। भी अवाम है। खालिद साहब, आपको मेरा सवाल समझ में नहीं आ रहा। आप मुझे ये बताइए कि पैलेस्टीनियन आर्म सिविलियन आपको पता है कितना मर गया है इस वक्त तक?
7,300 समथिंग जी, उसके ओवरऑल टोल जो कंपैरेटिवली है उसमें हाँ, हमास उसका इंक्लूडेड, वो वक्त अलहदा नहीं है, मैं हमास कह रहा हूँ समेत उस ये टोटल फिगर है। मैं अगला आप सवाल सुने, उस 7,000 कुछ के अंदर क्या परसेंटेज है हमास की? आई डोंट नो, हाउ कैन आई नो? क्या होगी? आपके ख्याल से मतलब कोई अंदाज़ा 1%, 2%? सारी आबादी तो जो है वो मिलिटेंट नहीं ना होती। मिलिटेंट जो है ट्रेंड जो लड़ने वाले होते हैं वो तो कुछ ही होते हैं ना। आप चाहते आप हैं कि बात कर वो रहे कहीं हैं एक जगह इकट्ठे हों, उनको बम लगे, वो मर जाएं, ये खबर सुनना चाहते हैं आप? मैं ये खबर नहीं सुनना चाहता। बात ये है कि आप उसको रेजिस्टेंस फोर्स मानते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मानता हूँ। रेजिस्टेंस कहाँ हैं ही पे है? वही तो रेजिस्टेंस 7,000 कर रहे बंदा मर हैं गया। जिससे इसराइल परेशान है। मैं उसी को मानूंगा ना जिससे इसराइल परेशान नहीं है। दुश्मन परेशान नहीं है, खालिद उसको भाई, मैं कैसे आपको रेजिस्टेंस लगता फोर्स है कि मानूं? इज़राइल इस वक़्त परेशान है? परेशान है, पूरी दुनिया में उसके ऊपर जूते पड़ रहे हैं। लंदन के अंदर, स्पेन के अंदर, रोम के अंदर, पाकिस्तान मैं के अंदर, एग्री पूरी करता दुनिया में हूँ, लेकिन आम लेकिन पब्लिक उसके लेकिन खिलाफ है। इसी को कहते हैं लेकिन जूते लेकिन पड़ना। जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि सीज़ फायर तो जो लोग अथॉरिटीज़ के अंदर हैं, उन्होंने रिजेक्ट कर दी है। वो तो आप 2 हफ्ते के अंदर एस्केलेट कर रहे हैं। उनका जो प्राइम मिनिस्टर है, वो तो कह रहा है कि ये शुरुआत है। हम तो ये पूरी करें, जगह के ऊपर ओके, काबिज़ हो ठीक है, जाएँगे। ठीक है। करे ठीक करे है, तो भेजे वो जाते हैं परेशान ज़मीनी हो रहे टैंक, हैं। भेजे, कितने टैंक तबाह हैं उनके इसराइल के? बम्बिंग ही कर रहे हैं ना तैयारों पर। ज़ालिम क्या कर सकता है? ज़ुल्म ही कर सकता है, वो पहले ही कर रहा है। वो तो मुझे पहले ही पता है वो कर रहा है। कर तो रहा है ना उसको ज़ुल्म, जो वो पहले लाइसेंस भी कर अच्छा रहा था, अब भी कर रहा है। अच्छा, इसमें शाहजी, मैं मेरा ख्याल है कि आई आई एक कमेंट मेरा था कि आई एग्री विद व्हाट शाह इज सेइंग, बट आई वुड लाइक टू हैव अ ब्रीफ ओपिनियन ऑफ आंदोलन ऑन दिस मैटर, क्योंकि मुझे लग रहा है फर्स्ट टाइम खालिद और आंदोलन शायद एक ही पेज पे हों कि हमास और पैलेस्टीनियंस एक है या नहीं है। अच्छा, इसमें दो एस्पेक्ट है। अभी नंबर्स की जहाँ पे बात हो रही थी, तो लास्ट मंथ दी Hamas itself says that we have 40,000 fighters. Day before yesterday, they said we have 38,000 fighters. So apparently, in a month, they have lost close to 2,000. So if I have to believe Hamas's number to be correct, right? Last month they had 40,000 fighters. This month they have 38,000 fighters. So they have lost 2,000 fighters. Going purely by that speculation. अब बात इसमें करते हैं कि हमास पैलेस्टाइन को रिप्रेजेंट करता है, नहीं करता है। ये इस पे कुछ एक स्टैटिस्टिक्स भी आए हैं दैट ओनली 40% ऑफ पैलेस्टीनियन सपोर्ट हमास एंड 32% सपोर्ट फतेह एंड others etc. But the entire matter is Hamas is running its command and control center out of the biggest hospital in Palestine. Right, I put in the chat, the video footage and photographs and the tunnel infrastructure, which IDF claims. Right, so this is a Israel, Defense Ministry claim that which has been confirmed by a couple of guys, which were, taken by IDF, from the Hamas fighter. So if Hamas is running its infrastructure below the civilian and that to most vulnerable civilian infrastructures in the state of Palestine, and people are not opposing them and throwing them out, then I sincerely believe that there is a broad spectrum support. अच्छा आंदोलन जी, आप अगर कह रहे हैं कि ये जो से हॉस्पिटल्स हैं उनके नीचे से हमास ऑपरेट कर रहा है, सो यू आर बेसिकली कॉलिंग हमास यूएन ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज दीज हॉस्पिटल्स आर रन बाय द यूएन। सो ये एक मैंने अभी चैट पे डाला है 10 मिनट पहले, लास्ट आर्टिकल जो मैंने डाला है, इसमें जो मेन अल हाइफा हॉस्पिटल है, क्या नाम है, मैं अभी नाम देख के फिर से कर, जो वन ऑफ द बिगेस्ट हॉस्पिटल्स ऑफ पैलेस्टाइन, it is claimed that the Hamas main command and control center is at the basement tunnel of this particular hospital only. Propaganda. अच्छा आंदोलन जी, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है मैंने, लाइक जो इसकी बेस पे आपका आर्ग्यूमेंट है कि दैट्स द रीजन व्हाई जो इजराइल का ऑपरेशन है जो अभी हो रहा है दैट इज जस्टिफाइड, क्योंकि आपका ये मानना है कि पैलेस्टीनियंस आर हमास इज
Palestinians जो कि खालिद नहीं, साहब कह रहे हैं. अच्छा, मैंने ऐसा नहीं कहा. मैं ये कह रहा हूं कि what Israel is targeting is very specifically Hamas. What Hamas is doing, they're using human shields, and in this entire activity, जी जी, वो हो सकता है आप इसलिए कि आप इसराइल की जो है वो हिस्ट्री है कि वो सिविलियन आबादी को टारगेट करता है उनकी आबादी को कम करने के लिए. ये इसकी हिस्ट्री रही है. अच्छा, नहीं, इसमें भी एक डेटा पॉइंट टेक्निकली मैं आई वांट टू ऐड वन थिंग. एक सेकेंड, आई वांट टू ऐड वन थिंग. टेक्निकली अब्दुल्लन जी जो आप ये बोल रहे हो ना, तो दैट स्टैंड ट्रू फॉर इजराइल एज वेल, बिकॉज अकॉर्डिंग टू सम न्यूज IDF was told to stand down for 7 hours while Hamas was doing whatever it was doing inside Israel. आपको लगता है कि IDF से इजरायली फोर्सेस के वो खैर that's a different thing, but they were told to stand down for 7 hours. What was IDF doing for 7 hours while Hamas उनकी गलियों में खुला घूम रहा था? Don't you think it looks a lot like making a nice ground कि कल को कोई ये ना कहे कि हम जो है हम कर रहे हैं तो अब हम कर रहे हैं, अब हमें कोई रोके ना. जी जी, इससे पहले मैं वो एक जो ये जेनोसाइड वाला एक डिस्कशन आया था, अगर साहब ऐसा होता तो यू नो द पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन हैज गॉन अप बाय 5 times in the last 70 years, whereas Israeli population has gone up 4 times in the last 70 years. And you know, the Israeli population also includes a lot of people who have moved in from various parts of the world into Israel. So if that's the case of a genocide में 5 गुना पॉपुलेशन थोड़ी ना बढ़ती है 70 साल में. मार तो रहे ना क्या वो उनकी. आप इसको आप जो अपने आंखों से कह रहे हैं, खुद ये भी कह रहे हैं कि 7,300 बंदा मार गया है, तो इसको और क्या नाम देंगे आप? अभी खुद आप फिगर दे रहे हैं और खुद इसको डिनाई भी कर रहे हैं. जी जी, मैंने कहा कि ये हमास कंट्रोल्ड पैलेस्टाइन हेल्थ मिनिस्ट्री वेस्ट बैंक के ऊपर बमिंग हुई है, वहां तो हमास है ही नहीं. वेस्ट बैंक के ऊपर किस लिए बमिंग हुई है? जी जी, आपने ओपनिंग में ही बताया था कि हिजबुल्ला ने अभी रॉकेट फायर करके इजरायली के कुछ सैनिकों को मारा. वो तो आज की बात मैं बता रहा हूँ. हिजबुल्ला तो आज फायर किए हैं, वो तो रिएक्शन में किए हैं, और आज की लेकिन हिजबुल्ला तो वो लेबनान से, वो तो लेबनान में है हिजबुल्ला, तो वो तो लेबनान से वो कर रहा है as far as I know. So you know there are आंदोलन भाई, आप जो भी हैं, आपको जो है ना फेर होके बात करनी. टारगेट ना करें ना कि भाई जरूर हमास को मुजरम करार देना है, चाहे फॉल्स फिगर लेके आए कहीं से आगे पीछे से जो मर्जी. फेर होके बात करें. आपकी बात हम सुन रहे हैं, अच्छी बात होगी, हम मानेंगे दलील के साथ. जी जी, मैं तो जो पढ़ रहा हूँ, जो देख रहा हूँ, जो डेटा पढ़ रहा हूँ, उसके बेसिस पे बात कर रहा हूँ. और किसकी तरफ से आया है ये भी तो जरूरी है ना. जी जी, और मतलब बस इसमें एक थोड़ा सा आप ऐड करना चाहता हूँ. खबरें पढ़ के सुना दें तो हम कहेंगे आपने पढ़ा है, कोई सहीफा तो नहीं पढ़ा आपने ना. चलिए, मेरे ख्याल से कुछ और स्पीकर्स को भी सुनते हैं. साहब और भी थे जो काफी शायद वेट कर रहे हैं. हाँ जी, ऑलराइट, ओके. अच्छा आंदोलन Am I audible? Am I audible? Yes, you're audible. Acha, to coming back to the question, sorry for my I think Hassam needs. I think my mic is working now. Is it fine? Yeah, it's fine. Coming back to Shaji's notion and the question that he put forward earlier, there is definitely a political situation at play as well, apart from the emotional investment that all us Muslims very rightly have. But I was reading this article published in the Christian Science Journal, and they cited this rivalry that was going between Fatah. Fatah is supposedly supporting or funding or standing by the Palestinian Authority, and they had recognized Israel, and they were entitled to be in cooperation with them as per the Oslo Accords. And the Hamas attack, it came at a time when things were swiftly changing in the extended region, and this was sort of a challenge to the global or the regional power balance that was sort of disturbed in the region, and Hamas wanted to turn the tables, and hence we saw this. So I agree with Shaji to the extent that it is a war that is leaving the civilian population of Gaza behind in suffering, and what we see is the Muslim
world not standing behind them. The leaders are limited in the actions that they can take. Just today in Pakistan, there were, as usual, two separate protests or sort of processions going on in two different cities by two different parties. So I think, as far as Pakistan is concerned, uh, we are not doing enough. And I welcome yesterday's statement by Erdogan after millions mobilized across London, New York, and Paris, I believe. But we're not seeing the response that should be given, and hence हसन भाई सॉरी they, आपको इंटरप्ट आज आपने जो इस्लामाबाद की रैली देखी है अल जजीरा की रिपोर्ट है कि ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी रैली है एशिया में होने वाले जितने ठीक भी है। प्रोटेस्ट मैं कह रहा हूँ खालिद साहब के एक तरफ पे हमारी बात अमेरिकन इस एम्बेसी के कोई सामने जो अभी हुई है पर आते हैं ना, अभी अभी आते हैं ना, लेट हिम स्पीक, लेट हिम स्पीक। नहीं मैं सिर्फ उनको पॉइंट बता रहा हूँ कहते हैं जी नहीं नहीं नहीं, enough। आपका वो वाला पार्ट अभी वैसे भी आपने उसके बारे में बात तो करनी है, आपने स्लॉटिंग करवाई है। सॉरी तो हसन भाई आप करें बात यार वैसे हसन भाई बात आप पाकिस्तानी हैं तो आप उर्दू में बात क्यों नहीं कर लेते जी जरूर, मैं यार नेक्स्ट खालिद टाइम भाई जो जिसमें कंफर्टेबल है आप उनको उसी में बात करने दें ना, दोनों मेरे लिए भी कंफर्टेबल सोचे ना मैं इंग्लिश स्पीकिंग नहीं हूँ आपको ना मैं आपको इतनी चार मेरी उर्दू में लैंग्वेजेस आती हैं। और दूसरी बात यह है, हमारे ऑडियंसेस में बहुत सारे कई लोग इस तरह के भी हैं जिनको उर्दू नहीं आती, वो बाद में हमें सबटाइटल्स भी दिखाने पड़ते हैं, बट इट्स फाइन। करें ठीक है हसन भाई जारी रखें आप तो मैं यही कह रहा था कि जो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स हैं पैलेस्टाइन में, तो उनका ये मानना है कि हमास अटैक से जो यूएस के मूव्स हैं वो डिरेल हो सकते हैं टू देयर एफर्ट्स इन ब्रोकरिंग अ डील बिटवीन रियाद एंड इसराइल व्हिच वाज अंडर प्रोसेस फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ। तो इस इजरायली ऑफेंसिव से एक्सपेक्टेशन यही थी कि एक एंटी इजराइल सेंटिमेंट गैल्वेनाइज हो जाए, जो कि हो भी गया है इन इन द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड। और हमने अपने अरब कंट्रीज के स्ट्रीट्स में भी यही देखा, हमने पब्लिक सेंटिमेंट को भी बढ़ते हुए देखा। और अभी हमें ये it is Israel is being forced to accept that they need to address this unresolved question of Palestinian status, or before they actually begin to pursue more in-depth economic and security ties with the Jewish states. I'm talking about the Muslim countries. So the Palestinian issue must be resolved first, and I think after all the diplomatic uh, movements and processions that we've seen in the last few days, Israel is seemingly on the losing side of things. Yeah. I have a few questions from you, Hassam. पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, why, on what grounds do you think, what is Israel losing? Shaji, I think that क्योंकि war crime upon war crime, we're seeing them go to the extent that now there's no communication for the people of Palestine. We're seeing a food crisis. We're seeing food war also. They want to kill them to starvation. So I think nobody will begin to accept this. This moral obligation and this moral devastation that Israel is doing. I think. लेकिन यार हसाम, यहाँ पे सवाल ये बनता है कि हाउ डू वी फाइंड समथिंग और गेट समथिंग इज अ लॉस और समथिंग इज अ विन? आपका क्या क्राइटेरिया है इस बारे में? Sorry, Shaji, can you please repeat the question? जी, आपका लूजिंग और विनिंग के अंदर क्या गेन क्या है, उसके अंदर मतलब गेज क्या है आपका? So I'm thinking more along the lines of public sentiment. That would be the only gauge at this moment. And we're seeing लेकिन resolutions. so are you not keeping into mind what is happening in Gaza right now? जब हॉस्पिटल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, लोग मर गए, ठीक है, 7,000 से ज़्यादा 2 हफ्ते में मर गए, वो बाज़ आने की बात नहीं कर रहे। जो अथॉरिटीज़ हैं अराउंड द ग्लोब, वो सीज़ फायर करवाने की बात नहीं कर रही। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं पूरी दुनिया के अंदर, चाहे जितने भी लोग सड़क पे निकले हुए हैं, वो इज़राइल को गो अहेड दे रही हैं। हाउ
are the Palestinian, how is Israel losing? अगर फॉर एग्जांपल वो 2 हफ्ते और ये करते हैं एंड द वे दे आर सेइंग दैट दे आर गोइंग टू टेक द एंटायर रीजन अंडर कंट्रोल, तो टू स्टेट वाली बात तो आप भूल जाएं। उसके बाद सिंगल स्टेट के अंदर आप कंप्लीट अपार्थाइड स्टेट जो इम्प्रिजन करके लोगों को रख रही है, वो उसकी सिचुएशन के अंदर आ रहे हैं। वो तो पहले ही है शायद, वो तो पहले ही है। गजा एक बहुत बड़ी जेल है, वहां पे कौन से ह्यूमन राइट्स थे? जेल में भी रोटी तो मिलती है ना लोगों को, कि नहीं मिलती? ये बात नहीं कर रहा, एक सेकेंड आप रुक जाएं। अब सिर्फ फलस्तीनियों के जो है नुकसान को खालिद भाई, हाईलाइट करके बढ़ा चढ़ा के पेश करके तो कह रहे हैं जी नहीं रेजिस्टेंस ना होने चाहिए, जंग नहीं होने चाहिए। भाई इसराइल मैं का तो भी रेजिस्टेंस इसराइल की की मैं टूरिस्ट तो इंडस्ट्री वो मैं तो बर्बाद इस होकर रह वक्त गई है। ये पॉइंट आप क्यों खालिद नहीं जेल साहब, में लाते? खालिद भाई, सबसे पहली बात है कि इस वक्त तो मैं रेजिस्टेंस की बात ही नहीं कर रहा। इस वक्त तो मैं बात ये कर रहा हूँ कि हाँ जी, वन साइडेड बात इसराइल ना जो कर रहे है हैं, वो वन जीत रहा साइडेड है बात या ना, हार रहा है। मर भी अभी रहा तो है। हम इसराइली मार रहे हैं, मर भी रहे हैं। इसराइल हम मुसलमान 100 मरे और यहूदी 1 मरे, इसराइली 1 मरे, एक बराबर है। जी ठीक है, शाजी, कोई अगर बात नहीं, आपका इसराइल वहां पे ओपिनियन है, खड़ा है लेकिन तो लेकिन वो हसाम से मेरा ये क्वेश्चन था और आप भी उसका जवाब दे दीजिएगा। हसाम ने एक बात की कि एट द एंड ऑफ द डे व्हाट इज हैपनिंग नाउ, अभी क्या हो रहा है कि इसराइल जो है वो लूजिंग साइड के ऊपर है। ये पब्लिक अगर सेंटिमेंट, हाँ, पब्लिक सेंटिमेंट वाइज, यस। पूरी पब्लिक दुनिया में इसके खिलाफ सेंटिमेंट प्रोटेस्ट वाइज हो रहे तो हैं, वी नीड टू बी क्लियर अबाउट। मिलियंस के प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आपके लंदन में भी हुआ है, जी जी, रोम में भी हुआ है। खालिद भाई, मैं विनिंग और लूजिंग को शायद डिफरेंट परसेप्शन से देखता हूँ। मैं पब्लिक सेंटिमेंट को एक गेज देता हूँ, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आप विनिंग और लूजिंग की लॉसेस को इक्वेट करते हैं तो उसके अंदर इंसानी जान, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ फिर तो व्हाट फिर हैपेंस, लड़ना ही नहीं पूरी चाहिए बात ना, क्योंकि कमजोर मैं बंदे को तो फिर लड़ना मैं ही ना अगर चाहिए। अगर एक सेकेंड, यहाँ पे मेरा ख्याल है कि आपको मेरी बात की अगर आप समझ नहीं रहे तो मुझे एक्सप्लेन नहीं करना होगा। समझ रहा हूँ मैं, इसलिए तो मैं आगे से बोल रहा हूँ मैं। जी, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर तो आप फॉर एग्जांपल इट वुड बी अ विनिंग थिंग कि अगर फॉर एग्जांपल पैलेस्टाइन जो है वो गाजा स्ट्रिप से निकल के बाकी इसराइल के अंदर जाके सेम सिचुएशन कर दे और बाय द एंड ऑफ अगले महीने जो है अगर वो जो ऑनस्लॉट है ना वो ऑपोजिट हो रही हो, तो मैं कहूँगा पैलेस्टीनियंस जीत गए। मैं अपना गेज बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, मेरा अगर गेज फॉर ये है एग्जांपल मेरी कि पूरी हक मेरा और अभी आपको बातल, बात की समझ आ नहीं सकती क्योंकि मैंने बात शायद कंप्लीट नहीं मेरा की। सोचने का अंदाज और है ना। हाँ, तो देखिए कोई मैं बात नहीं, तो हजरत मुझे इमाम मेरा हुसैन मेरी बात रजी तो अल्लाह ताला सुनो अन्हो ना का मानने वाला यार। हूँ। आपके अंदाज को मैं बाद में फिक्र सुनता के एतबार से जाएंगे तो हम कहेंगे यार उन्होंने तो पूरा कुंभा कटवा लिया, कोई मुकाबला बनता ही नहीं। लेकिन हूँ। मैं वहां पे पूरा हजरत इमाम हुसैन नहीं मरे थे, वहां पे यजीद मरा था और क्यामत तक के लिए मर गया था, और इमाम देखिए वो हुसैन क्यामत आप तक के कहीं लिए और जिंदा हो लेके गए जा थे। रहे हैं बात। मैं तो इस अच्छा नहज पे सोचता हूँ। शाजी जो जी। कहना चाहते हैं वो अलोंग मोर मैं रियलिस्टिक। जरा एक सेकेंड, हसन, सॉरी, मालकम भाई, और कुछ कहना है आपको या आप मुझे बताएं कि मैं बात कर सकता करें हूँ? करें आप करें करें। जी, अगर बीच में आपने टोकना है तो मुझे पहले ही बता दें, मैं चुप कर जाता हूँ। नहीं आप नहीं नहीं, बोलें, करें करें। आप बोलें, कोई मसला नहीं। नहीं, नहीं आप नहीं, मैं बोलें, खामोश, खालिद भाई मैं बोलें। म्यूट। थैंक यू खालिद भाई। उसके बाद भी आप मेरी जो ओपिनियन है ना उसे डस्टबिन के अंदर फेंक दें, आप आके मुझे चपेड़े मार लें रियल लाइफ के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं शाह जी, लेकिन ऐसा सुन क्यों लें करूंगा? ठीक छोटे है। यू भाई हैं कैन आप मेरे। स्लैप मी इफ यू वांट, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मेरे बड़े हैं, ठीक है। तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई, तो लेकिन थोड़ा काम डाउन हो जाए please। अच्छा जी, नाउ मूविंग ऑन। बात यह है कि विनिंग और लूजिंग दो तरीकों से होती है। अगर तो 2 हफ्ते के बाद हमें ये पता लगता है कि ऑलरेडी जिस तरह 2017 के अंदर एक स्टेटमेंट आया था कि जेरूसलम इज नाउ द कैपिटल ऑफ इजराइल। दूसरा स्टेटमेंट इस बेस पे ये आया था कि पैलेस्टाइन एज अ कंट्री नो लॉन्गर एग्जिस्ट्स। हालांकि बहुत सारी कंट्रीज जिन्होंने ये बात कही थी
वो टू स्टेट सोल्यूशन की बारे में बात करते हैं, लेकिन दे बेसिकली स्टिल सेड एज ऑफ नाउ एज फार एज वी आर कंसर्न द स्टेट ऑफ इजराइल एग्जिस्ट्स एंड द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन डज नॉट एग्जिस्ट। अगली चीज उन्होंने क्या की, ताकि लोगों के दिमाग के अंदर भी आ जाए, गूगल मैप्स के ऊपर जरा जाके पैलेस्टाइन ढूंढे, आपको नहीं मिलता। आपकी एवरीडे एप्लीकेशंस के अंदर, आपकी ऑफिशियल जगहों के ऊपर देयर इज नो सच थिंग एज पैलेस्टाइन। क्यों 2017 के बाद ये खत्म हो गया? बिकॉज दे एक्सेप्टेड दैट। ठीक है, अब अगर 2 हफ्ते के बाद ये चीज होती है, 2 वीक्स, 1 मंथ, या जब भी ये वाली अगली सीज फायर होती है, तो गेज ऐसे किया जाएगा कि कौन जीता और कौन हारा, इन बेसिस पे नहीं कि किसने रेजिस्टेंस दिखाई, कौन सही था और कौन गलत था। आंसर आपका उस चीज के अंदर है कि उस एरिया का, गाजा का, उस 2-3 महीने के बाद जब ये सीज फायर होती है तो स्टेटस क्या है। क्या ये चीज डिसाइड करेगी कि क्या अब गाजा सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटिव जिस हालत में भी था वो एग्जिस्ट करता है, या पैलेस्टाइन आउटराइटली वहां पे अभी तो सेटलमेंट्स करता था, अब अगर आउटराइटली आके वो काबिज हो जाता है, जिस वजह से भी, चाहे आप हमास को भी अच्छे कैटेगरी के अंदर ले लें, तो फिर भी सही साइड पे होते हुए भी हमें इसी चीज पे गेज करना पड़ेगा, उस टेरिटरी की बेस पे, क्योंकि दिस इज आल्सो अ टेरिटोरियल फाइट, कि व्हाट हैज ओकर्ड और दुनिया क्या एक्सेप्ट करने के लिए जा रही है। तो ये पॉइंट मेरा था। हसाम आफरीदी, आपका आई डोंट नो इफ दैट मेक्स सेंस और नॉट, अच्छा, पब्लिक अफरीदी साहब, परसेप्शन तो का मैं भी साइड। एक सवाल पूछ लूं। अच्छा, हमास को फिर और क्या, या फलस्तीनी को क्या करना चाहिए था, ये भी जरा आप बता देना। जी हसन भाई। नहीं, देखिए, मैं तो कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। खालिद साहब, आप तो मुझसे ऐसे पूछ रहे हैं जैसे पता नहीं मैंने कोई इसराइल पैलेस्टाइन पे पीएचडी की हुई है। लेकिन अ टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट विल ऑलवेज हैव a certain party winning and a certain party losing out. Yes, Israel has the resources. Yes, Israel has the backing of the Western powers. So, they have it strong. But ideology is important as well. और खालिद साहब, मैं आपकी ओपिनियन को भी इसमें इंडोर्स करता हूँ। हमारी आइडियोलॉजी कहती है कि no matter how strong the other party is, faith will win at the end of the day. But as far as the history of the conflict is concerned, हमने देखा कि since 1948 up until 1993 when the Oslo agreements were signed, the area of Gaza Strip ये इजिप्ट से लिया गया था, और जो वेस्ट बैंक था वो आई बिलीव इट वाज कंट्रोल्ड बाय जॉर्डन। फॉर 31 और 32 ईयर्स हमने देखा कि इसमें कॉन्स्टेंटली इसराइल ने अपनी सेटलमेंट्स बढ़ाई, और कोई 21 के करीब इन्होंने यहाँ पे सेटलमेंट्स बनाई, और इवेंचुअली हमास जैसे फैक्शंस ट्रिगर हो गए, बिकॉज एक तरफ पे यू सॉ ऑपरेशन। सो it's a hard equation, Shaji, and I don't see a clear solution inside in the near future. देखो, इसके अंदर ना मैंने 2 थ्योरीज सुनी है। देर आर 2 पार्टीज इन द पैलेस्टीनियंस। एक वो हैं जो आपने अर्लियर भी बात की थी, जो ये बोलते हैं कि पैलेस्टाइन ओनली 2 स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए। दूसरे ये बोलते हैं पैलेस्टीनियंस के अंदर ही कि सबको इक्वल राइट्स होनी चाहिए, और हम इसराइल को एक्सेप्ट कर लेते हैं अगर ये हमें इक्वल राइट्स देते हैं। अब इसके अंदर इशू है, इसके अंदर पैलेस्टीनियंस की एग्रीमेंट की बात ही नहीं है। इसराइल सिंगल स्टेट सोल्यूशन को एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि अगर डेमोक्रेटिकली ये चीज़ कभी एग्जिस्ट करती है तो पैलेस्टीनियंस आउट नंबर द ज्यूज और द ज़ायनिस्ट इजराइलीज। उसके अंदर ऑर्थोडॉक्स भी हैं, उसके अंदर सिंगल स्टेट सोल्यूशन के अंदर वो कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। एंड देयर आर सम पीपल इन द पैलेस्टीनियन ग्रुप्स हु रियलाइज दैट दैट्स द easiest way to uphold what Israel is doing and prove that they are oppressive, they are just acting that they are not। वो तो सबको ही पता है, लेकिन फिर तो कोई दूध का दूध पानी का सिंगल स्टेट सोल्यूशन के लिए इसराइल बात करने को तैयार नहीं।
Do you realize that? ये भी एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। तो पैलेस्टीनियंस के अंदर से भी दो चीजें आ रही हैं इसके अंदर, अगर हम इसे जियो पॉलिटिकल तरीके से देखें और इमोशनल ना हो। आपका आई डोंट नो इफ एनीवन हैड हर्ड दिस बिफोर, लेकिन जिसका भी इस पे कोई ओपिनियन है आप प्लीज बोल दें। सबसे पहले लेके हसाम। हसाम आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके, he's disconnected. अब आ रही है। नहीं, ये तो मैं बोल रहा था। मेरे ख्याल सही। अच्छा, I guess, Shaji, should we move towards the next question? I just need a couple of minutes, if allowed, on the earlier one. आप बोल दें, फिर उसके बाद I'll just move to the next question. अच्छा, इसमें थोड़ा सा एक पर्सपेक्टिव है इस पूरे इशू को इमोशनली देखना और रिलीजियसली देखना। मेरे ख्याल से दैट्स वन पर्सपेक्टिव। थोड़ा इसको लॉजिकली देखना। देखिए, विश्व पटल में इन दिस डे एंड डेट एंड टाइम, somewhere people have to learn coexistence, right? And this has been the bane of Islamic society so far. Some of the countries are doing pretty well in that, but this problem of coexistence emerges a lot. Whenever there are two populations staying, and one of those population happens to be the Muslim population. So as to say. अब इसी एस्पेक्ट को आप ले लीजिए जो अभी करंट कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और इजराइल और पैलेस्टाइन के लैंड मास के बाहर जियो पॉलिटिक्स देखते हैं जरा। अब आपके दो सबसे अच्छे दोस्त जो थे इस कॉन्फ्लिक्ट से पहले, यानी सऊदी अरेबिया और यूएई, राइट, दे हैव मूव्ड समवेयर इन द मिडिल। यूएई हैज इन फैक्ट मूव्ड स्लाइटली अवे, सऊदी अरेबिया समवेयर is adopting a neutral position so far. और जो वेस्टर्न लीडर्स हैं उनकी अगर आप लैंग्वेज देखिए तो ये एक जो ग्लोबल मुस्लिम है उनके लिए एक चिंता का विषय होना चाहिए। आप यूएस देख लीजिए, आप यूके देख लीजिए, आप फ्रांस देख लीजिए, जो तीन मेजर वेस्टर्न स्टेट्स हैं जो पावर भी होल्ड करते हैं काफी कुछ हद तक। जर्मनी, अब यहाँ पे आप ट्रंप का लेटेस्ट स्टेटमेंट सुनिए, बाइडेन का देख लीजिए। आई मीन इट्स बाई पार्टीशन, राइट? आई मीन वेदर इट इज रिपब्लिकन और डेमोक्रेट, राइट? The language they are using is jihadi, Islamist, and this language is being discussed in their parliaments, their state addresses, so on and so forth. Same kind of language is getting echoed from UK, right? And same kind of language is getting echoed from France. Very recently, German Chancellor also used somewhat similar language. तो ये जितने भी आपके अभी जो इजराइल और पैलेस्टाइन की कॉन्फ्लिक्ट जोन के बाहर जो मास मूवमेंट्स हो रहे हैं इन सपोर्ट ऑफ पैलेस्टाइन और अदरवाइज, दिस इज आल्सो कॉजिंग अ लॉट ऑफ अनरेस्ट इन दी वेस्टर्न पॉपुलेशन। अभी बर्लिन में झगड़े बगड़े भी हुए हैं, शायद मेरे ख्याल से 60-70 पुलिस वाले और वो लोग घायल हुए। तो अब आप इसका लॉन्ग टर्म रेपरकशन देखिए कि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट से एक चीज तो ये इमर्ज होके आ रही है कि को एग्जिस्टेंस की प्रॉब्लम है एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को। ये मैं नहीं कह रहा हूं, राइट? माय ओपिनियन में भी बायस, यू कैन रिफ्लेक्ट दिस इन अ ग्लोबल स्केल। एंड सेकंड, दीज काइंड ऑफ प्रोटेस्ट एंड सपोर्ट ओनली इन द नेम ऑफ रिलीजन कमिंग आउट across all the major cities. No. Just one second, allow me to complete. I may be wrong, I'm just giving you my assessment. Is also causing, जिसको आप इस्लामोफोबिया बोलते हो, वो एक्चुअली फियर के फॉर्म में डेवलप और हो रहा है। एंड ये इनफ शाहजी, मेरी बर्दाश्त जवाब दे रही है। नहीं जी स्पीक खालिद साहब, प्लीज। मैं आपको अगर इंटरजेक्ट करूं अंदुलन साहब, इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है। लास्ट एक तरफ मैं उसका पॉइंट खत्म कर रहा हूं, आई वाज एट द एंड। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप इस कॉन्फ्लिक्ट को अभी इस कॉन्फ्लिक्ट में देखेंगे, इस कॉन्फ्लिक्ट के पहले का विश्व का नजरिया और इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद का विश्व का नजरिया, ये मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं जो मुसलमान बाहरी देशों में रह रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा नहीं शो कर रहा। और आपके कुछ एक जियोपॉलिटिकल फ्रेंड्स जो थे वो भी साइड चेंज कर चुके हैं। तो समवेयर इट्स नॉट शेपिंग वेरी वेल।
जी अच्छा, मैं एक कमेंट कर दूं, लाइक खालिद भाई, हम इधर नॉर्मल डिस्कशंस करते हैं, वी डोंट हैव टू एग्री विद मेड्यूसा आंदोलन, जो भी कोई बात कर रहा है हम आपस में एग्री ना भी करें, बट वी हैव दीज डिस्कशंस। काउंटर नैरेटिव उनका है एक आंदोलन का, एंड आई गेस हसाब एक वांटेड पॉइंट टू मैं देना ये चाहता था कि यहाँ रोम में या यहाँ पे पेरिस में या स्पेन में जो हुए हैं ना प्रोटेस्ट, वो सारे मुसलमानों के नहीं है, उसमें यहाँ पे लोकल पॉपुलर है, यहाँ की पॉपुलेशन इटालियन है, स्पेनिश है, फ्रेंच है, वो शामिल है, अक्सरियत उनकी थी। तो ये चलिए, गलत कह रहे हैं कि जी कि मुसलमान है और सिर्फ जहादिस्ट है कोई इधर निकले हुए, ऐसी बात नहीं है। ट्रंप तो बेवकूफ आदमी है, उसकी बात का क्या रेफरेंस देना यहाँ पे। और मुसलमान जो भी उठेगा अपने हक की खातर, वो उसी को दहशतगर्द कहेंगे। जो मर रहा है, जिसका घर बर्बाद हो रहा है, दहशतगर्द वही है, लेकिन जो मार रहा है, जुल्म कर रहा है, नहीं नहीं ये ठीक है। पता नहीं कौन से पैमाने हैं आपके, किसी को गलत या किसी को ठीक कहने के, कि चूंकि डाकू के हाथ में क्लाशनकोफ है, उसने आपको लूट लिया है, लिहाजा आप चुप करके लूट जाओ, क्योंकि ग्राउंड रियलिटीज ये है कि लूट जाना आपका लिए अच्छी ऑप्शन है। यही कहना चाह रहे हैं आप, तो मैं तो यही समझा। अच्छा मालकम भाई, एक बात, एक मेरा आपसे खालिद भाई क्वेश्चन है, मुझे ये बताएं कि मैं आपसे एग्री करता हूँ, मिलियन मैन मार्च के ऊपर इराक के लिए भी लोग निकले थे, अफगानिस्तान के लिए भी बाद में लोग निकले, पहले अफगानिस्तान के लिए, फिर इराक की दफा बहुत ज्यादा हुआ, फिर उसके बाद वेरियस और हमने प्रोटेस्ट देखे, उन सारी चीज़ों में हुआ, लेकिन हमने कभी जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में देखा तो हमने देखा कि लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर यूनानिमस डिसीजन हुए मेजॉरिटी के अंदर, और वो वॉर पे चले गए। हमने यूएस में भी यही देखा। अभी भी आम बंदे की आवाज़ है, मैं एग्री करता हूँ आपसे, मेजॉरिटी लंदन के अंदर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर आउट, इसीलिए वो यूएन की वो उनको स्टेटमेंट यूएन का प्रेसिडेंट देगा, उन बेचारों को घर भेज देंगे। जो ये कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट्स कर रही हैं, और जो आप ऑपोजिशन का उसके अंदर देखते हैं रोल, और जो आप रोल देखते हैं रूलिंग पार्टीज का, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो यूएस हो, या वो कनाडा हो, कनाडा का स्टांस देखें कितना अजीबो गरीब है इस पूरे सिनारियो के ऊपर। एक तरफ वो अभी जब खालिस्तान की बात हो रही थी तो वो इंडिया को ह्यूमन राइट्स के लिए बोल रहा था। इजराइल की दफा सेम, जस्टिन ट्रूडो हैज अ कंप्लीटली ऑपोजिट स्टांस। यूक्रेन की दफा उनका स्टांस डिफरेंट था, ठीक है, अफगानिस्तान की दफा डिफरेंट था। ये सारी चीजें, जब आप जिन लोगों के प्रोटेस्टर्स की बात कर रहे हैं, वो तो आम आवाम है, वो तो हर जगह निकलती है, ये तो अपना काम कर ही जाते हैं। डू यू रियलाइज दैट? ये ऑपरेसर्स हैं, ये तो करते ही हैं। तो हमें शायद करना क्या चाहिए वैसे तय मुसलमान, मैं आपकी बात करना चाहता हूँ, तो जालिम को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए जुल्म को, या अपनी, हम कुछ नहीं कर सकते, हम जा नहीं सकते, कम से कम अपनी आवाज तो बुलंद कर सकते हैं कि यार ये गलत है और ये ठीक है, ये जालिम है, ये मजलूम है, हम तो अपने खालिद भाई यहाँ पे हम और क्या Khalid, एक सेकंड शाजी, आई एम गोना मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। खालिद भाई, मैं आपकी इस बात का छोटा सा जवाब दूंगी। जब पीएलओ और इजराइल आपस में ऑस्लो अकॉर्ड साइन कर रहे थे एंड दे वर मूविंग टुवर्ड्स पीसफुल रेजोल्यूशन टू द होल थिंग, हमास सेड दैट नो, वी विल स्टिल बॉम्ब एवरीवन, ठीक है। So it was clearly like they were like, no, we will not stop violence and we're not going to let this happen, because clearly the Muslim Brotherhood did not want PLO to rise above them. So वो थोड़ा सा उनका अपना मसला भी है, maybe if they come on the same page they'll be able to do something, but presently it's just, I mean, अगर PLO सिर्फ होता, यासिर अराफात होता सिर्फ, तो मे बी आज तक कुछ इलाज हो जाता है इसका, ठीक है। जब मैं एक वो पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ कि जब हम कहते हैं ना कि गाजा इज हमास एंड हमास इज गाजा, we're actually feeding into those people, in the narrative of those people who are against Palestine, who say that टेक्निकली तो इजराइल का भी यही नैरेटिव है ना कि गाजा इज हमास, हमास इज गाजा, सो वी विल बॉम्ब देम ऑल, वी विल कार्बेट बॉम्ब देम बिकॉज़ दे ऑल नीड टू डाई। पता है कि हमास कब बनी थी? You don't have to do that.
we don't have to like make them the same. नहीं, ठीक है, आपको पता 2007 है से ये अब पीएलओ खालिद की भाई मेरी बात रिएक्शन सुने। में बनी है, हमास तो नहीं 1986 रिएक्शन में नहीं की बनी, बुनियाद पे। रिएक्शन में ऑलरेडी पीएलओ थी, पीएलओ को अपना काम करने देते वो लोग, नहीं करने दिया। पीएलओ की रिएक्शन में ये हमास बनी है कि इन्होंने फलस्तीनियों का केस सही मैनों में नहीं लड़ा, इन्होंने नहीं हथियार वो डाल तो दिए, पीस एक्कॉर्ड साइन हो रहा था, वो लोग तो कर रहे थे। इसीलिए अब बॉम्बिंग इंतफादा से क्या शुरू उखाड़ हुई थी। लिया फिर खालिद भाई, मुझे बताएं बॉम्बिंग से क्या उखाड़ लिया? मर रहे हैं लोग, कुछ नहीं हुआ। दोनों तरफ 7,000 मर रहे हैं, फलस्तीनी 2 उधर भी हफ्ते में मर रहे मर हैं, गए। इधर भी मर रहे हैं। इसराइल को जो जालिम है वो कब्जा करके आराम से एक एंजॉय दफा भी मर करेगा, गए, समझ फिर कर। उसके बाद अभी बैक टू बैक फलस्तीनी मर रहे हैं। मुझे आई डोंट अंडरस्टैंड कि हाउ दिस डिड एनी गुड फॉर पैलेस्टाइन, लाइक दे हैव लिटरली डिस्ट्रॉयड देयर लाइव्स। जो शहीद हो रहे हैं वो गम में नहीं है, वो कहते हैं जी हमारे बच्चे, हम जन्नत में जा रहे नहीं हैं। वो तो आपको लगता है, ये आपको लगता है? आप जरा जाओ उनकी वीडियोस हैं, देखो, उनकी वो वीडियोस कैसे हैं, कैसे लोगों की जो बच्चे मर रहे हैं, जो वो रो रहे वो हैं, जो खुश है, उनकी वो जो वो वो बच्चे वो यतीम वो रह नहीं रहे कर हैं, रहे। उनके आपको लिए पता नहीं ये कौन सी अपनी मीडिया देखती है, शहादत, जिनको शहीद होना है ना वो कहीं और जाके शहीद हो, ठीक है? किधर जो जाके शहीद ऑलरेडी हो, वो मसलों में लंदन में है, जाके ठीक है, फट तो जाए, उनको वो अपने घर में शहीद हो रहे हैं। क्यों मसलों में डाल रहे हैं? भाई ये उनका PLO अपना could have रास्ता है, PLO ये could have उनका taken रास्ता है, care of हमारा it, रास्ता right? नहीं है, हमने नहीं उन्हें कहा कि ये करें, ये उनका अपना देखो रास्ता देखो है। देखो खालिद भाई, आप मेरी बात सुनो, ठीक है? जब एक ही जगह में मल्टीपल फैक्शंस बन जाते हैं ना, तो वो आपस में ही लड़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है? दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड टू, इनफैक्ट Israel was more afraid of the Yasser Arafat thing, the PLO, than it was ever from Hamas, because they knew they're going to bomb us, we're going to bomb them to death, right? They knew फिर that आपकी this is how इंफॉर्मेशन they're going रॉन्ग to है, get. They didn't know how to आपकी deal with इंफॉर्मेशन Yasser गलत है। Arafat. Medusa, I just want to add, because you're not wrong, and we cannot support the loss of human life, no matter where it is. If it's a Jew dying, if it's a Christian dying, it's all wrong for us. लेकिन वो पश्तो में भी कहते हैं कि वो जंग की मुड़ी कीगी, जब जंग होती है तो उसमें फिर लोग मरते हैं। तो जब इक्विटी नहीं होगी, जब ये जंग फेयरनेस नहीं नहीं है होगी, हसाम, ये जंग नहीं है, दैट्स द प्रॉब्लम। देखो, जंग तब होती है जब दोनों पार्टीज दोनों साइड पे एक लेवल पे होते हैं, ठीक है? वो कभी भी दिस नहीं इज हो नॉट सकता, एक मुसलमान कभी भी नहीं हुए आज तक। that is ये not true. हमेशा हमेशा दो, जब देखें, जब the UK was in war with Russia and Germany, it was not strong enough. When the US came into the war, then it became strong. So nobody has, I'd say nobody is powerful या nobody is weak. जब conflict आ जाता है तो फिर उसमें resources को नहीं देखते हैं. And the same we see in the Hamas escalation. But my point was, so what you're trying to say is, what you're trying to say is that we should be like, fine, it's war, collateral damage, okay, good night no. everyone. वो It's अपने fine. घर को आजाद करवाने के लिए लड़ रहे हैं, ये उनका राइट है। कि जब इक्वेशन में इक्विटी और फेयरनेस नहीं होगा और उसमें हमें एक ओप्रेशन का एक एलिमेंट नजर आएगा, तो फिर वी नीड टू call a spade, and we need to stand by No, the ones who... nobody's, we know Israel is an apartheid state. Nobody's supporting that. We know what they're capable of. They don't care. They would just kill. If it was in their hand, they वो मस्मार कर देते, बिल्कुल फ्लैट कर देते गाजा का, वो क्या कहते, पार्किंग लॉट बना देते गाजा का, और जो वो कर रहे हैं टेक्निकली। My point is कि this could have been solved with a lot less life, with a lot less death. This could have been solved by PLO who were not given a chance. But anyway, let's move on to the next question. The next question is, what impact does this ground incursion have on civilian and regional stability? As we all know that Israel is far more well equipped than Hamas. Hamas have like barely 10,000 fighters right now, and Israel have amassed like 300,000 soldiers on its borders. There are tanks and there are assault rifles. In fact, they are planning to attack at night. That's why almost the whole IDF army have night vision goggles, and they have everything prepared for the night attack, as they have all the artillery and stuff. Sorry. And Hamas, on the other hand, do not have the proper training of fighting at night, and the only thing it can do, if luck is on their side, right? They're not trained. I mean, even if at the end point people join them and they become 100,000, only at this point, only luck can help them succeed. And another thing, because they know all those the area really well. Hamas generally knows
all the area really well, and it has this tunnel system. They can fight through rubbles. On the other hand, though, IDF have a small training area, which is also called Mini Gaza, where they train for most of the stuff there. So technically, I would say that on the ground invasion, Hamas might have a little upper hand, a little, I would say, not too much. But at some point, I feel like they're going to lose, and then they're going to add themselves into the normal Palestinians, right? And that is going to cost the normal Palestinian a lot. But yes, Shaji, please. अच्छा मेदूसा, आपने कोई फलस्तीन में कोई प्रोटेस्ट देखा है जिसकी बुनियाद पे ये बात कर रहे हैं कि ये हमास ने हमें मरवा दिया है? जी जी, आपने उसका पूरे यूएन की एक रिपोर्ट है, वॉशिंगटन टाइम्स के भी पेपर हैं, पैलेस्टीनियन टाइम्स के भी न्यूज़पेपर हैं। पिछले 10 साल के अंदर बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए हैं इस चीज़ के ऊपर, और ये खालिद भाई हमें भी नहीं पता था। वी ये तो बेसिकली ओपिनियन तो है ना, वो तो सारे एक पेज तो ओपिनियन नहीं है। अब पाकिस्तान में भी ऐसे हैं, जब यही तो रशिया मैं ने आपको अटैक किया एक्चुअली था अफगानिस्तान के ऊपर, एक तो कहते सेकंड थे बात तो गर्दन तोड़ो सुने रशिया ना, को। एक सेकंड मेरी बात सुन। देखें, पता है क्या, कोई भी जगह होती है ना, वहाँ पे वो जो कम्युनिटी होती है ना, उसके अंदर भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं होता डिफरेंट है जाहिर है, पार्टीज को लेके। नॉर्मल ये है पॉइंट है यहाँ पे। है इस ये। वजह से देखें, एक चीज आप स्ट्रेट समझ लें, यहाँ पे मुझे आंदोलन साहब का नहीं पता, लेकिन उनके अलावा मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ, यहाँ पे कोई इसराइल का सपोर्टर नहीं बैठा हुआ। वी ऑलरेडी नो दैट शायद इसराइल मेरी इज अच्छा थोड़ा सी कंफ्यूजन मेरी दूर कर दें। जी जी, इसराइल से अपना मुल्क छुड़वाने के लिए क्या करना चाहिए था हमास को या फलस्तीनियों को? देखें, वो अभी फाइनल पार्ट है उस चीज का। आप कंक्लूजन पे क्यों आ रहे हैं? ये तो अभी मेरा हमने जिस मतलब है कि तरीके हर गुजर दिन के साथ उनके बंदे भी मर रहे हैं, उनकी जमीन भी छीनी जा रही है, उनको खेतों से घरों से मसमार किए जा रहे हैं, रोज हम देखते हैं ये चीज। तो वो कौन सा ऐसा पॉइंट था कि जहां पे जाके उनको रिएक्शन दे देना चाहिए था? देखें, अच्छा चलें खालिद भाई, फिर मैं आपसे क्वेश्चन, अगर आपने ये कर ही लिया तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ। आप मुझे ये बताएं कि आपको लगता है कि इस एक्शन का रिजल्टेंट निकलेगा जिस तरह का? निकलेगा इंशाल्लाह ताला। उसकी वजह मैं आपको बताऊं, अच्छा, जी इसराइल जी के जो बहुत से यूरोप से जो जाके वहां पे बस्तियों में ले रहे थे ना, प्रॉपर्टियां खरीद रहे थे, वो सब भाग भुग गए हैं। उनकी सियाहत की सनत तबाह हो गई है। ठीक है, उनके 1400 फौजी जो मरे हैं, आज तक 50 साल में नहीं मरे इतने फौजी, जो अभी उनको सिविलियन बना के पेश कर रहे हैं इसको मुकदमे को खराब करने के लिए। वो कहते हैं अच्छा 1400 आप फौजी हैं उनके, जिनकी उन्होंने आप फुटेज दिखाई है। चलें इसराइल को चलें कोई ठीक है, नुकसान नहीं हुआ। आपने वो चलें फुटेज नहीं देखी कि एयरपोर्ट के ऊपर लाइनें लगी हुई हैं भागने के लिए चलें इसराइल से? चलें चलें, आप उनके सिविलियंस की बात कर रहे हैं जो फॉर एग्जांपल वहाँ पे अलीगल तौर के ऊपर आए थे, वो आना बंद कर देंगे, और आप मुझे बताएं क्या चीज़? ये थोड़ा, इसराइल की सारी इकोनॉमी किससे चल रही है? अच्छा, ये आप इसराइल, अमेरिका इक्वेट उसको सपोर्ट कर रहा है। अमेरिका जो है वो शैतान अजीम है, वो उसको सपोर्ट कर रहा है। उसके गलत देखें, कोई सामने इतना देखें, ज्यादा नहीं होना चाहिए ना मादा अच्छा प्रस्ती। अगर आप ये बात करें तो हक फिर, और अगर बातिल को आप भी बात आजमा कर के लें चीज तो लेनी चाहिए कि नहीं? जब आप बात कर लेना तो फिर उसके बाद मुझे मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा कि मैं हाँ इसको जी, किस तरह व्यू करता राइट हूँ, एंड लेकिन रॉन्ग आपने भी कोई चीज तसल्ली है से या सुनना नहीं, है, कि राइट एंड फिर रॉन्ग आपने भी देखना तसल्ली चाहिए से कि सुनना। नहीं, कि नुकसान किसका जी कम जी, होना मैं है या किसका ज्यादा होना जी है, जी सिर्फ जी यही एक पैमाना है किसी का साथ देने या किसी को ना देने के लिए। जी, अब मेरी बात ना आप गौर से हम्म सुनिए, और उसी के अंदर जो मडूसा ने भी अभी क्वेश्चन किया था, वो उसका भी जवाब साथ ही आ रहा है। ठीक है, बात यह है कि अगर आप फंडिंग देखें इसराइल की यूएस से, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि यूएस का हाफ जितनी फंडिंग और एड वो बाकी लोगों को देता है, उससे कंपेयर करें तो आधा इसराइल के ऊपर ऑफ देयर एंटायर फंडिंग बजट। And do you know that is just 30% of what is received by Israel from United States? आपको पता है बाकी 60 समथिंग परसेंट कहाँ से आता है? 60 समथिंग परसेंट पता है क्यों, कौन सी कम्युनिटी से आता है? दैट इज नोन एज योर इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस। इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस जो यहूदी भी नहीं है,
जो अमेरिका के अंदर, इसको सर्च कीजिएगा, ये तो बड़ी हमें पता है इंटरेस्ट। उनका जी इवेंचुअली। जी, ठीक है। वो वहां पे जाके रहते नहीं, वो वहां पे जाके सेटल नहीं होते, वो वहां पे पैसा भेजते हैं, वो ज़ायनिस्ट आर्मी हैं वो को। तो, ज़ायनिस्ट सपोर्ट कर रहे हैं उनको, यहूदी जी भी यहूदी। बिल्कुल। जी जी, मैंने कहा था तहम्मुल से सुनना है, मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ ना, जब मैं एग्री कर रहा हूँ तो फिर वो मेरा भी फ्लो ना तोड़े, मेहरबानी होगी खादे पे। ठीक है। जब फॉर एग्जांपल वो इस चीज की फंडिंग करते हैं, तो उनका काम क्या है? उनका काम ये है कि थर्ड टेम्पल बन जाए। थर्ड टेम्पल बनने के लिए स्टेट ऑफ इज़राइल को एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, जिसका सॉरी पैलेस्टाइन को एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। 2017 में उन्होंने पहला स्टेज क्लियर कर लिया। दूसरा स्टेज अब क्या है कि वो तो मौका ढूंढ रहे थे कि किसी तरीके से एक ही दफा, आपको पता है ये सीज फायर मेरे ओपिनियन के अंदर क्यों नहीं हो रहा? आप मेरे से ज़रूर डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन ये सीज़फायर इस वजह से नहीं हो रहा, दे आर गिविंग इज़राइल अ विंडो ऑफ अपॉर्च्युनिटी, वेदर इट्स यूनाइटेड स्टेट्स और इट्स ब्रिटेन, कि वो एक ही 2-3 हफ्ते के अंदर वहां पे कंप्लीटली काबिज हो जाएं। जहां जहां पे उन्होंने काबिज होना है वो काबिज हो जाएं, जो लंगड़ा लूला स्टेट बचा भी हुआ था वो भी खत्म हो जाए। तो अगले 3 या 4 हफ्ते के बाद व्हाट व्हेन दिस होल थिंग बिगिंस, एंड पे उन्होंने सीज फायर के लिए तो एग्री करना ही है। इसराइल को बात वहां पे अब निगोशिएशन टेबल पे पता है क्या होगी? हॉस्टेजेस की नहीं होगी, लोगों को छुड़वाने की नहीं होगी, ये बात नहीं होगी कि सेटलर्स कहाँ पे हैं, बात ये होगी कि इसराइल कब गाजा से जाएगा, इसराइल लेट्स सी, अपनी लेट्स सी, अपने आप लेट्स को सी, बैक ट्रैक कब लेट्स करेगा। सी। ठीक है, और दैट इज व्हाट आई फियर। और आम बंदा जो आप बात कर रहे हैं कि इसका कल्प्रिट कौन है और इस चीज की रिजल्टेंट क्या है, और इसी चीज पे मैं विनिंग और लूजिंग के ऊपर बोल रहा था, जो मैंने आपको नक्शा खींचा है। अगर 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, दिस इज व्हाट वी आर नेगोशिएटिंग, और द पीपल ऑफ पैलेस्टाइन आर नेगोशिएटिंग, कि अब नेक्स्ट स्टेप के ऊपर इसराइल गाजा कब खाली करेगा, तो we've lost, we've not gained nothing, चल देख and लेंगे, that is वक्त what the वक्त पे sad देख लेंगे। part is. Acha guys, please moving on to the second question. मैं एक बार बोल चुकी हूँ, and I'll say it again. What impact does this ground incursion have on civilian and regional stability? Please focus on the question. Thank you so much. Who wants to go first? Hassam, Khalid Bhai, Sid, Furqan. Medusa, I'd like to go first. It is like Shaji put forward the most under agreeable and practical scenario. तो implications region wise यही है कि एक broader regional conflict trigger हो जाए, जिससे we'd see this war being dragged on, and there is no chance of the scenario that Shaji painted happening so fast, although I agree with it. But the conflict will, go beyond borders, and it will proceed into West Asia even more. Assam bhai, if the conflict was capable of going outside of Israel and Palestine, uh, don't you think that the countries surrounding it, uh, या तो इस तरह हो कि इसराइल जो है वो मुकम्मल गजा और वेस्ट बैंक के ऊपर काबिज होने के बाद फिर कहे कि भाई ये जो है लुबनान का एरिया है, ये भी ग्रेटर इसराइल का हिस्सा है, तो वो भी हमारे हाथ में पकड़ाएं। फिर ये डेल्टा तक जो है ना वो किंगडम ऑफ डेविड जो है वो बनता है, तो वो भी जरा इधर करें। कुछ सीरिया का हिस्सा बनता है उसके अंदर, किंगडम ऑफ डेविड के अंदर। तो या तो इसराइल पहले लुबनान के ऊपर अटैक करे, फिर सीरिया के ऊपर अटैक करे, फिर मिस्र के ऊपर अटैक करे, तो फिर वो वाला सिनेरियो खिंचता है। इफ द सराउंडिंग कंट्रीज वर even remotely capable or willing or were honorable enough, उनके अंदर इतनी कुछ थोड़ी बहुत गैरत होती मुसलमानों के अंदर, तो कुछ ना कुछ तो करने के जोगे होते। फ्रैंकली देखिए, स्पीकिंग क्या फौज है इसराइल की? 3 लाख। ह्यूमन लेवल पे अगर हमारा हम देख लें, तीसरा हिस्सा नहीं है। जी जी साम भाई। मैं कह रहा हूँ कि अगर ह्यूमन लेवल पे हम इसको देख लें तो it is gut wrenching and it is devastating. मैं दोबारा यही कहूँगा कि दिस इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ अ प्रोट्रैक्टेड वॉर, जिसने अभी तक 7,000 पैलेस्टीनियन, some 1,500 Israeli soldiers
और सिविलियंस लोग। तो ये इसका ह्यूमन लेवल पे इम्प्लीकेशन है। अगर जियो पॉलिटिक्स की बात करें तो दिस इज़ अ गेम चेंजर। जो अभी एग्जिस्टिंग रीजनल रिलेशंस हैं, स्टेट टू स्टेट लेवल की अगर मैं बात करूं तो वो सारे डिसरे हो जाएंगे, उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जो थोड़ा बहुत प्रोग्रेस की बात हो रही थी वो भी हम उसमें डिसरप्शन देखेंगे। और इस कॉन्फ्लिक्ट को हम मेटासाइज हुआ होते देखेंगे बियॉन्ड इवन द रीजन, एज फार एज माय ओपिनियन इज कंसर्न। तो एक मल्टी फ्रंट वॉर देखने को मिल सकता है if the scenario that Shaji put forward, and again I reiterate that I agree with it, but इससे ये होगा कि this will just keep going on and more people will die. I think Sam bhai ke the fact that it will keep going on was it is by design, and it is by design by Israel. Uh, मैं हमास की सपोर्ट इस वजह से नहीं करता क्योंकि मुझे ये लगता है कि just like Al Qaeda was actually a pawn of actually very openly, and to begin with it was a pawn of America, मुझे इस सारे सिनेरियो में हमास इसराइल का प्यादा लगता है। हाँ, खालिद भाई माजरत, मुझे इस तरह लगता है। वो मर Without रहे हैं और realizing, said उनको Kazim टैंक at के Karuk, बाद without realizing they're playing into Israeli hands. Without realizing. Without realizing, it can be a part of it. Actually, most likely is a part of it, Khalid भाई। उनको अब पता हमें भी नहीं चल ये रहा। तो नहीं पता, we can never be a judge of ये the मैं intent नहीं behind मान सकता भाई, मैं जानता हूँ it. जब हमास को। देखें, जब जब नेतन्याहू इस तरह के स्टेटमेंट्स देते हैं कि दिस इज सपोज टू बी अ माइटी वेंजेंस, तो it means that they are taking certain hits, and it is not, the road for them is not as easy as you're making it sound. I would like to add something here, Hassam. I think you're forgetting that I mentioned that IDF was told to stand down for good 7 hours. So I don't think, and there are even reports, I'm not sure how authentic they are, but there are even reports where they're saying that Hamas is saying that we're trying to give them their, hostages, but they're not taking them back. They're not interested. They're just interested in revenge, which is like, they've kind of played into their hands. For them, it's the revenge of not just Hamas or the recent past, it's the revenge of the Arab takeover, which goes back about 1,000 years. So, it's a holy I war. don't think it's It's not just a simple. they just want the place and they're going to take it either way. Public में कुछ बोलना और I think intention में कुछ होना are two different things. They just want they just want to take over and that's it. And they got the best excuse. I mean, start में अगर technically देखा जाए तो किसी ने इसराइल को कुछ नहीं कहा. वो तो later on when Israel started going too far, everybody started saying that this is wrong and everything. But even that's not stopping them. There are 14 countries who voted in favor of not doing ceasefire. So. But you said, do you not agree that Hamas has also been playing a long game? इन्होंने एंटिसिपेट नहीं किया होगा कि ये रिएक्शन आएगा अगर हम ये करेंगे. I Maybe think they no. did. I don't think Hamas was playing a long game. I think Hamas was like, it is now and no, never tomorrow. So just go and bomb people and take people. I think whatever they did it without thinking. They were not thinking what's going to happen after that. I don't think so, because Hamas goes back a long time and they have very credible people. We had Qasem Soleimani being killed, who was head of the Al Quds Brigade, I believe, which was the most strongest of the Hamas forces. But I think they do have tricks up their sleeves. It does not mean that they're not incapable or they are not predicting the Israeli response accurately enough. They might be willing to absorb what is surely a strong response on behalf of the Israeli defense forces. So it goes both ways. I think we cannot just say that, we cannot underplay Hamas's role in all this. Well, I mean, if the plan is seeing bombs as fireworks in the night on the top of Gaza Strip, then that is very successful. But other than that, I don't see anything any long game. Anyway, Shaji is back. Shaji.
Am I audible? Can you guys hear me? Yes, we can hear you, Shaji. Okay, thank you very much. Okay, Yes, first Shaji. of all, somebody being experienced or non-experienced as an organization uh, is not that relevant when it comes to resources. और जो आपको नज़र आ रहा है उस सिचुएशन के अंदर as far as the global resources are concerned और जो वहाँ पे डिसीजन मेकर्स हैं, हालांकि यूएन का जो प्रेसिडेंट है उसने कितनी आउट बहुत डायरेक्ट स्टेटमेंट दिया था। उस स्टेटमेंट के अंदर क्या डिफरेंस था, लेकिन क्या यूएन स्टॉप कर सके उन्हें? नो, दे कुडंट, दे गॉट वीटोड। वाई आपकी जो मेजर कंट्रीज हैं, ईरान हो गया या रशिया हो गया या चाइना हो गया, हाउ फार आर दे गोइंग टू लेट दिस हैपन? बिकॉज एट सम स्टेज Russia also has very good relations deep down with the Israeli state. Second World War के बाद one of the main allies which basically Israel had was Russia. अगर आप एड और डिफरेंट चीज़ों को देखोगे, that is another example. ओह, तो अगेन ये जो अभी वो कर रहे हैं, हाउ फार आर दे गोइंग टू गो? यस, चाइना इज अ डिफरेंट बॉल गेम, आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन अगर आप इसका रिजल्टेंट देखते हो, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, मैक्सिमम 6 हफ्ते तक ये चुप रहेंगे। दिस इज अ साइलेंट विंडो व्हेन इट कम्स टू द अमेरिकन्स एंड द कैनेडियंस एंड द ब्रिटिश एंड द यूरोपियंस। इसी के अंदर फैसला होगा। इट इज नॉट समथिंग विच इज गोइंग टू बी लॉन्ग लास्टिंग। ये कोई यूक्रेन जैसी बहुत बड़ी कंट्री नहीं है जिसकी आप बात कर रहे हैं, ना ये एक It सेकंड has ना। already been decided. So, Shaji, just one I think I'd like to confirm as well, and bring to your knowledge of. Sorry, that's not the right word. I just want to add to it. जो रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट हमने देखा since 2022, don't you think it has changed the Russian narrative on the West, because they seem to have ऑफ been कोर्स इट हैज, वो तो नहीं, ऑफ कोर्स इट हैज, वो तो मैं आपको कह ही नहीं रहा, लेकिन वेस्ट इज नॉट जस्ट इजराइल। यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर आर क्रिश्चियन इवेंजेलिकल सपोर्टर्स ऑफ स्टेट ऑफ इजराइल in Russia as well. They're not connected to Americans. अमेरिकन के अलावा आप अगर रशियन पॉलिसीज को देखें, एट द हाइट ऑफ द कोल्ड वॉर, वन ऑफ द ओनली कंट्रीज विच enjoyed luxuries from both sides in the Soviets as well as from the Western Allies was Israel. वरना तो सारा दुनिया बाकी दुनिया तो पोलराइज थी। So, how far is Ukraine war going to play? So they're going to come into certain amount of negotiations that is more deep rooted. अभी भी जो रशियंस हैं वो बड़ी डायरेक्टली जब आप अपनी स्टेटमेंट इजराइल के खिलाफ दे रहे हैं, वो बड़ी नपीतोली दे रहे हैं। वो डायरेक्टली इजराइल को कह रहे हैं कि पीस टॉक्स करनी चाहिए। दैट इज व्हाट दे आर सेइंग। दे आर नॉट सेइंग कि इजराइल इज अ अपार्थाइड स्टेट। नंबर वन, दे आर नॉट स्टेटिंग कि इजराइल जो है वो गलत कर रहा है। नो, दे आर जस्ट यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स for because of geopolitical reasons of the current nature, and they're just playing down on that. They're showing opposition to the Americans, yet they are not condemning Israel like they should be. And that is the whole thing. और फिर वहां पे बात ये आती है कि अगर फॉर एग्जांपल ये वाला नोशन है कि मुसलमानों ने हेल्प करनी है पैलेस्टीनियंस की, तो यहाँ पे फिर एक और क्वेश्चन उठता है कि सऊदी अरेबिया क्यों इंटरसेप्ट कर रहा है जो जा रहा है मिसाइल या रॉकेट फायर होने के लिए इजराइल के अंदर? हुज एलाय आर दे? और फिर अगर आप ईरान पे काउंट करके बैठे हुए हो, तो ईरान को how far is Iran going to go? उनका तो जनरल इन्होंने 2018-19 के अंदर जब मारा था, उसके बाद उन्होंने अटैक करने का सोचा था, वो तो उसके ऊपर भी चुप करके सही टाइम का वेट करने के लिए बैठ गए।
तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है, my bottom line is, my ending note on this entire situation is कि आप मुझे ये बताएं कि आपको इसके अंदर विनिंग सिचुएशन कहाँ नजर आ रही है। हम लोग बहुत सारी इमोशनल बातें करते हैं, ये खालिद भाई भी थे, मुझे नहीं पता कहाँ चले गए हैं, ठीक है, और लोग भी हैं, ठीक है, वी ऑल सपोर्ट पैलेस्टाइन, लेट्स क्लियर दैट, ठीक है, वी ऑल सपोर्ट के पैलेस्टाइन शुड बी फ्री। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मुझे पता है आप फ्रीडम उनको जिस तरह दे रहे हो, वो फ्रीडम तो जो है वो उनको जन्नत पहुंचा रही है, और जिन शहीदों की आप बात कर रहे हो वो हमास के लोग नहीं हैं, वो आम बंदे हैं जो अपने घरों के अंदर रात को सोए हुए हैं और दिन को वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे। आई एम टॉकिंग अबाउट द पैलेस्टीनियन पीपल। तो हाउ इज दिस इवन वर्थ इट? आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। मुझे मुझे Shaji, इस क्वेश्चन की नहीं समझ आता। Guys, I just want to let you guys know it's the last 10 minutes. That's it. Go जी, on. Shaji, one thing, I endorse the Russian narrative because वो खुद अपना expansionist agenda pursue कर रहे हैं into Ukraine, and that is what led to NATO being armed around the region. So I agree how Russia and Israel can have certain similarities, but I think they are our best bet. Russia, China, and Iran. They are of sorts, they are representing the Muslim narrative, and we don't have any option but to rally behind them, especially when two of the countries are major veto powers in the Security Council. Well, Hassam, I do not think they are proposing any Muslim narrative. I do not think they're going to go against Israel. I do not believe, and for a second, and this is based on the last 70 years of diplomatic relations between Russia and then Soviet Union and Israel. Abhi bhi, it will be a negotiation. I do not think they're going to go completely outright against Israel. Maximum वो कहेंगे कि peace कर लो. Hold on. Maximum वो कहेंगे ceasefire कर लो, peace कर लो, और पीस जब हो जाएगा तो उसके बाद गाजा से निकालो इसराइल को, इसके ऊपर नेगोशिएशन में मीडिएटर्स मिल जाएंगे। Lekin Shaji, don't you agree? In the last 20 years, we've seen a global shift as well. You know, you've seen the rise of the rest happening. तो ऐसा हम जज नहीं कर सकते based on the last 20 years if something has been happening. अच्छा, आप It's मुझे इनमें से एक कंट्री बताओ जो आपने नेम की है, रशिया और China. चाइना, उनका इसराइल के साथ दोनों में से किसका बुरा रिलेशन है? किस चीज के अंदर बुरा रिलेशन है? इंटेलिजेंस शेयर करते हैं वो, ये चेक करें आप ये चेक करें कि क्या वो ट्रेड के अंदर कितने बड़े पार्टनर्स हैं एक दूसरे के, ये चेक करें आप। क्या उन्होंने उनके ऊपर कोई सैंक्शंस लगाई या लगाने की बात की, ये चेक करें आप। ठीक है, फिर आप ये जाके देखें कि एड जो इज़राइल को रशियन बेहेस्ट के ऊपर मिलती है, ठीक है, उसके अंदर कोई रोकथाम हुई, ये चेक करें आप। जो डेवलपमेंट चाइना कर रहा है इस टाइम पे इज़राइल के अंदर, ठीक है, वो चेक करें आप इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इज़राइल के अंदर चाइना हैज़ इन्वेस्टेड इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या उन्होंने उसके ऊपर उनको थ्रेटन किया कि वो हम रिमूव कर देंगे? तो on what grounds are we saying that we are not talking about a global shift? On what grounds are we saying or suggesting or thinking that China or Russia are going to oppose Israel, rise against Israel? That is my question. China is advocating for a more fair equation on the global front for the last 4 or 5 years. वो ग्लोबल साउथ की एक नैरेटिव के साथ वो प्रोसीड कर रहे हैं। इन्होंने ब्रिक्स जैसे फोरम्स पे इन्होंने एक्सपेंशन की बात की है। Sam, that is deviating from, with all due respect, that is deviating from my question. My question is not about कि वो बाकी दुनिया में क्या कर रहे हैं, वो तो मैं एग्री करता हूँ। मैं कह रहा हूँ इजराइल के साथ रिलेशन के अंदर वो क्या कर रहे हैं। I think it's मेरा all क्वेश्चन closely. बहुत डायरेक्ट है। I think it's very closely linked, and we cannot take any other factor in isolation when it comes to I'm not the taking global. it in isolation. I'm talking about the investment carried out by the Russians, which Sure, is true.
I'm talking about the ammunition the Russians provide the Israelis. I'm talking about the investment and infrastructure the Chinese are providing. I'm talking about the fact that China happens to be one of the largest trade partners of Israel. I am talking about the fact that Israel happens to be one of the greatest trade partners of Israel. So when you keep all these things into account, जब for example रशिया और यूक्रेन का मसला हुआ है, तो रशिया तो ट्रेड नहीं कर रहा इस टाइम पे यूक्रेन के सपोर्टर्स के साथ, और यूक्रेन के सपोर्टर्स जो हैं वो रशिया के साथ ट्रेड नहीं कर रहे। ठीक है, इसी तरीके से अगर ये साइड ली जा रही है, ना कोई सैंक्शंस लग रहे हैं, क्या चाइना ने या रशिया ने कोई इजराइल पे सैंक्शंस लगाए? क्या चाइना और रशिया देखिए ने कहा कि हम शाजी आपके शाजी साथ कॉन्वर्सेशन बंद करेंगे, इवन थ्रेटन किया इस बारे में? क्या उनके मैं ऑफिशियली कह कहा कि हम आपके प्रोडक्ट्स बॉयकॉट करते हैं? नहीं, द आंसर इज they नो। cannot we cannot expect them to boycott Israel because China व्हाट आर is यू open for everyone. एक्सपेक्टिंग फ्रॉम देम? Me as a layman, I'm expecting them No, to no, not stand as a for layman. justice, As the people or who support Palestine, what are we expecting from them? to uphold the values of human dignity and to stand against oppression. That's the expectation that And you people have. believe that they're going to do that? They are doing it, Shaji, for the last ever since October 7th at the UN. We are seeing it happening. Shaji, we have seen that Guys, apart from it's the last 4 minutes, so move towards your final statements, please. Shaji, Shaji, go first. please begin. No, no, Hassam, go first, then said, then I'll just say what I think I've said pretty much. Final statements. I'd say the need of the hour is to restore the principles of freedom, of equality, of justice, and that is, I think, what the world should advocate for and stay behind. Thank you very much, Sid. Well, I will just say that I have only heard very diplomatic things today कि इस तरह सारा कुछ है और वो लोग कुछ भी नहीं करेंगे. I mean, it is true. China is not going to do a damn thing because why would they? Russia is not going to do a damn thing because why would they? The reason why Israel is doing all of this is because simply as that Palestinian comedian portrayed it, the Egyptian comedian said it, because nobody is going to do a damn thing about it. They can very well, at the end of it, take the whole of northern Gaza, maybe some parts of south, or the whole of south of Gaza as well, while they're at it, because who the hell is going to stop them? I mean, they can very well take it, and what exactly is going to happen? Nothing. They are doing it because the world is allowing them to do it, and only who is the identity, or who is the demographic that's supposed to do anything against it? That would be, by the way, Muslims. We as Muslims, as Muslim countries, the Saudi Arabians, the Iranians, the Turkish, the Pakistanis, well, not Pakistanis because we're so far away, so we'll just remove ourselves from the equations, and then the Iranians will say, well, we have three countries in between them, so we will remove them ourselves from the equations. And then the Egyptians would say that, oh no, we are linked with Saudi Arabia in all of this because we are working on that infrastructure, and from China to Turkey, so we're going to remove ourselves from it. And then Jordan and Lebanon is going to say, well, Jordan is not going to say a damn thing because why would Jordan help them? The Palestinians back in the Black Friday try to uplift our government. So you know what? They can die for all we care, courtesy of the Jordanian kingdom. Just one. No. And You're reading it then too far. The question was about China and Russia as major challengers to the Western world order, not the region. As you're they referring to. are they No, are he's very giving much. his closing statement. That's what it Yeah, was. no, they are very much against the Western world order. But what do they care So what about do what you the think is going to happen as a result overall? Like, Oh, well, what do you what is going to happen is actually already been decided. It was decided before the 7th of October. The decision was that they are going to take some part of Gaza, or all of it. And who I is supposed to do completely so? agree with that notion.
I think this is what this is all about. And what are we going to do about it, since nobody is going to do anything about it, and we are going to be like, well, nothing is going to happen, so we should not do anything. That is what we have come to. Yeah, because No, this we're is not a counting on yeah, Russia. Tanisha. We're counting on Russia and China. We're not talking about Muslims doing anything. That's What? what No, we're I counting don't on. know who is counting on Russia and China, Shaji. Guys, these are your final statements. Please. Anyway, so my final Furkan statement bhai. is that Furkan we bhai. have. Yes, Furkan bhai, you give your final statement. Yeah, I'll make it brief. I think given the discussion और जो उधर की geopolitics और global politics भी आपने बात की, but I would go to the past and say कि भाई अभी तक कुछ नहीं हुआ था और अभी भी कुछ नहीं होगा. I hope de-escalate हों चीजें in the region, क्योंकि पहले भी लोग मर रहे थे, अभी भी मरेंगे, आगे भी मरेंगे. I don't know what the solution is, क्योंकि जब भी ये debate हुई है, like I don't see any solutions coming up, and जितनी भी peace talks या global powers ने भी intervene करने का देखा है, they haven't been successful in neutralizing the situation या कोई solution निकालने की तरफ. तो I just hope कि de-escalate हो, civilian lives कम loss हो, and sense should prevail. Thank you. Thank you very much. I just want to say this was all about basically taking over Gaza or some part of it, like Sid said. And if if China and Russia really wanted to put a blockade, they would have put a blockade by now. They're powerful enough. They haven't even mentioned it. There are no repercussions for Israel as we speak. कोई repercussion नहीं है. ना trade में, ना किसी और चीज में. Compare that to the sanctions with Ukraine. Compare that with sanctions on Iraq. Compare that to sanctions on Iran. Compare that to sanctions and how Turkey was compared. See how South Africa, an apartheid state, was compared at a time, even though white Africans थे वहाँ पे. And compared to that, ये एक सिंपल सा एनालिसिस है which is इस पे लोग डिसएग्री कर सकते हैं करना चाहें तो, लेकिन ये 4-5 हफ्ते के भी नहीं गुजरने हैं, उसके अंदर ही आपको पता लग जाना है जितनी तेजी और जितने फ्लरिशिंग तरीके से इजराइल अटैक कर रहा है. एंड नो देयर आर नो रिपरकशंस एट ऑल अपार्ट फ्रॉम द कॉमन मैन अराउंड द ग्लोब कमिंग आउट shouting and nobody is listening to them. So this I have to agree with Sid. Overall, Gaza is not just under siege. इस चीज कॉन्फ्लिक्ट के सीज फायर होगी और सीज फायर के बाद नेगोशिएशन होगी. इजराइल जो है वो गाजा के कौन कौन हिस्से पे जहां से काबिज हो गया उससे उससे निकलेगा कैसे. दैट्स माय ओपिनियन ऑन दैट. Okay, I guess we've had our final comments, and thank you for listening, everyone, and subscribe to the channel. Click the bell button to get regular updates, and we'll see you next time, I guess, with the same topic or maybe different. We never know. So see you next time. Bye bye. Thank you. Thank you, Vanessa.